Good evening, everyone. Warm welcome. I welcome you all in the Super Coaching Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. Before we start the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can begin the discussion. तो कल हमने जुलाई और अगस्त 2025 के जो करंट अफेयर बेस्ड या मैं कहूँ कि फाइनेंस करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट किया था एंड टुडे वी विल बी मूविंग अहेड एंड वी विल बी कंप्लीटिंग आवर डिस्कशन. तो कल के मुकाबले आज थोड़ा सा स्पीड को तेज रखेंगे. कंटेंट जो है दैट विल बी एज इट इज एज यू सेड. मैंने कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं बट आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम फॉर ईच एंड एवरी न्यूज. विल ट्राई टू रन लिटिल बिट फास्ट क्योंकि आज जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दे आर प्रीटी हाई. तो एक बार जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स दे नो दैट यस दिस सेशन इज फाइनली लाइव सो दैट दे कैन जॉइन अस इन दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ. इफ यू हैवंट शेयर्ड द लिंक, quickly share it, give me a thumbs up in the comment section so that we can begin the discussion without any further delay. और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है रिगार्डिंग योर फाइनेंस करंट अफेयर प्रिपरेशन, यू कैन श्योरली राइट अबाउट इट इन माय in the chat box itself or you can write about it on the telegram channel so that I can help you ताकि जो भी आपके इश्यूज हैं हम उन्हें रिजॉल्व कर पाए and you should surely score pretty good marks in the upcoming RBI Grade B examination with the help of these sessions. ठीक है जी, स्टार्ट करें. Shall we begin? All set? Shall we begin, guys? All set? Are you ready? Just give me a thumbs up. Just give me yes, sir, so that we can begin the discussion without any further delay. So I've shared the link with my students. I am expecting that you must have also shared the same. So let's get started. So here we go with the first question of the evening. अगर आपको याद हो तो last class में we have done 40 questions from the month of August. So today we will be completing the month of August as well as we will be moving ahead and we will be covering the month of July as well. चलिए जरा बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. तो 40 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा रखा था मैंने कि एक क्वेश्चन फिर उसकी न्यूज का डिस्कशन और उसके बाद एक और क्वेश्चन फॉर योर रिवीजन. सेम ट्रेंड विल बी फॉलोड फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, लेकिन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वी विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन फॉर ईच न्यूज सो दैट वी कैन कंप्लीट द एंटायर सेशन इन अप्रोप्रिएट 2 आवर 2.5 आवर्स टाइम ताकि आपके लिए बेनिफिशियल. ठीक है जी, आई होप 40 तक हमने कर लिया था. आई होप आपको याद होगा. मुझे 40 तक ही याद है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि वी हैव डन टिल 40 एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 41st क्वेश्चन. And here you go. 41st question is now on your screen. Which of the following statement is correct about I. Bhattacharya, who has been appointed as the Monetary Policy Committee member and he has replaced Rajiv Ranjan? I hope you remember that. So he has an experience in the central bank. That is true. कितने साल का experience है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन I'll go with this term कि हाँ central bank में experience है. अभी के लिए टिक कर लेते हैं. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन लाया हूं. आपको लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैंने जानबूझ के एक्सपीरियंस रखा है सो दैट वी कैन गो विद द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. ही हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ कतर सेंट्रल बैंक. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता. ही रिप्लेस्ड राजीव रंजन एज द member of Monetary Policy Committee. That is true. He was appointed during the 618th RBI Central Board meeting. That is true. उन्हें अपॉइंट किया गया था during the 618th RBI की जो मीटिंग थी उसमें ये अपॉइंटमेंट अनाउंस की गई थी. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि आपको भी पता होगी, मुझे भी पता. सो कीपिंग that in mind, I'll say 1, 3 and 5 are correct. I'm not sure about second and fourth. The moment you are not sure about second and fourth तो क्या करें सर? अब आप ऐसा कीजिए, ऑप्शंस को चेक करिए. सेकंड आप श्योर नहीं है, सेकंड आप श्योर नहीं है, सेकंड आप श्योर नहीं है, बट यू आर श्योर अबाउट 1, 3 and 5. इफ यू आर श्योर अबाउट 1, 3 and 5 तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बनती है, दैट इज बी ऑप्शन. एंड लकीली दैट इज द करेक्ट आंसर. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज द करेक्ट आंसर. आरबीआई जब भी कभी ऐसे ऑप्शंस देता है वेयर आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग यू टू गो बियॉन्ड योर level, so that doesn't mean that RBI is asking for each and every information to be clear with you. RBI is just trying to understand that whether you can go with the elimination part or not. So that is basically done in this particular news. So what all things you need to remember? You need to remember 618th RBI Central Board meeting,
I. Bhattacharya, he has been appointed as the Monetary Policy Committee member, and he has replaced none other than Rajiv Ranjan, who has been appointed as the chairman of DEPR. Rajiv Ranjan, September 2025 mein, he will be completing his journey with RBI, and he has been appointed, if I'm not wrong, the vice president of NDB. Say yes or no. Uske saath saath, if you remember, Dr. Urjit Patel, he has been appointed as executive director to IMF representing India. This is something which you need to remember. और एक मुझे और बताइए, who has been appointed ED to ADB, who has been appointed executive director to represent India at ADB. ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है. गिव मी द करेक्ट आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मूव अहेड. सो सेंट्रल बोर्ड मीटिंग हुई. उस बोर्ड मीटिंग में दे हैव डिस्कस मेनी एस्पेक्ट्स एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो डू रिमेंबर दैट international exposure, he has served as economic expert as Qatar Central Bank. So he has served as the economic expert at Qatar Central Bank. That was true or not? Sir, अगर ये true था तो आपने fourth option choose की. बिल्कुल sir, that was chosen as the correct option. हमें पता नहीं था, वो बात अलग है. Now I have added the information for everyone. If that is the case, Shruti, you have to revise the content again and again, more and more, so that you can at least identify one or two or bare minimum 3 statements out of 5, so that you can come up with the correct answer. Which of the following statement about the 618th RBI Central Board meeting and Bhattacharya profile are correct? तो मैंने एक mixed bag question बनाया for the entire news. It says that meeting reviewed domestic and global economic challenges including inflation and capital flows. ये बिल्कुल सही है. Ombudsman scheme performance was assessed in this meeting. That is correct. Bhattacharya spent most of his career in the RBI's financial market department. No, that is not correct. Bhattacharya has not spent most of his career in the RBI financial market department. Rather, I would say he has contributed a lot to the monetary policy formation as a advisory. He has also served as, I would say, he has served majorly in the monetary policy department only. So that is the reason he has been appointed as a member of monetary policy committee. His appointment ensures continuity in the India's monetary policy decision making. That is true. He has international experience in Qatar, gaining exposure to emerging market challenges. That is correct. So answer to this particular question would be A option. 1, 2, 4, 5 are correct, but the third statement is wrong. So answer is going to be A option. Moving on to the next question. The next question talks about the following statement about the SEBI's margin pledge repledge framework are correct. तो ये pledge repledge framework SEBI का क्या है? मैं आपको बता दूं, SEBI ने recently timelines को extend किए 10th of October 2025 कर दिया, which was earlier ought to be 1st of September 2025. ये है क्या? बेसिकली ब्रोकर जो है they misuse the client securities for proprietary trades or for delayed returning them. तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ब्रोकर के पास जो सिक्योरिटी पड़ी है क्लाइंट की, उसे डिले करते हैं रिटर्न करने में, या फिर उसे proprietary trade के फॉर्मेट पर यूज करते हैं, because this security has been kept by the customer to the broker as a margin obligation. But the new framework says that all the margin to be fulfilled through the depository using pledge or repledge, ensuring ownership remains with the client. तो अब क्या है कि अब आपको अपनी securities को practically there is no need to pledge your securities with the stock exchange. Rather, जो आपकी securities है, they will remain in the demat account, and in the demat account itself they will be pledged or repledged, which will allow the customers to enjoy the margin, and it will allow the stock exchanges to have the surety कि ये securities will be given to you if anything goes wrong, and it is surety for a customer as well कि in near future, the moment my trade with the stock exchange is complete, I will be claiming back my security. So the timeline has been extended to 10th of October. That is correct. Framework allow brokers to hold client securities directly for margin purpose. No sir, it is now indirectly. Earlier it was direct control, or it was earlier directly holded by the stock exchanges. Framework mandates all margin obligations to be processed only via NSDL and CSDL. That is absolutely correct कि जो भी आपका margin के लिए
pledging या repledging of security होगी, that will be done through the depositories. We have NSDL as well as CDSL, है ना. Pay in for invoked pledge is created manually by the brokers. ये जो pay in है, pay in का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो paying for invoked pledges है, that will be created by the brokers manually. That is not correct. यहाँ पे अगर मैं बात करूं automatic invocation होगा, that means pledge securities they are blocked for early pay in automatically. Pledge release for pay in will be immediate created or I would say the pay in block once pledge is released. तो जैसे आपने पैसा पे कर दिया, रिलीज हो जाएगा pledge. अगर आपने पैसा पे नहीं किया तो वही pledge security जो है वो automatically convert हो जाएगी in the terms of funds. So this is not done by the brokers manually, that is wrong. Framework ensures automated auditable processing of margin obligations, that is absolutely correct. तो जो भी obligations है that will be done in an automated manner. So answer to this particular question would be, I'll go with 135. So 135 के हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा that is B option. आओ जरा पूरी न्यूज देख लेते हैं. पूरी न्यूज क्या कहती है? SEBI has extended the implementation timeline of the margin pledge repledge framework. 1 सितंबर से 10 अक्टूबर बढ़ा दिया इसका टाइमलाइन. क्या है ये? Brokers they often misuse the client security for trades and delayed returning them. लेकिन अब margin obligations के लिए collateral demanded by brokers for equity and derivative trades will not be collected directly by the brokers. Rather, it will remain in the depositories itself, in the demat accounts itself, but they will be pledged or repledged as per the client and stock exchange agreement. So depository only margin processing pledge or repledge system eliminates direct broker custody. Pledged securities are blocked for early pay in automatically. Immediate creation of pay in block once pledge is released. Depositors or depositories they ensure straight through processing without manual intervention. Automatic validation reduces misuse as well as enhances the transparency. So this has been done by SEBI recently. This is something which you need to remember. इसी पे एक और क्वेश्चन है, देखना जरा. SEBI has issued the circular under the power guaranteed by section 11 of SEBI Act 1992. I'm not sure. Regulation 30 of SEBI Regulation 1992 provides authority for this framework. Again, not sure. Investor ownership of securities is transferred to brokers during pledge. Investor की जो ownership है securities की, earlier it was transferred to the brokers. That is correct. But now it is not transferred to the broker. The system helps prevent misuse similar to the Karvi stock broking. ये correct है. तुहिन कांता पांडे is the new chairperson of SEBI. That is correct. तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, ये मैं श्योर हूं. तो अगर मेरा थर्ड करेक्ट आंसर नहीं है तो उसके चक्कर में मैंने तीन ऑप्शंस तो हटा दिए. तीन ऑप्शंस हटाए तो मेरे पास बचा 4 और 5. सो 4 और 5 दोनों में अब मुझे चेक करना होगा फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है ही as per the options which are given to us. लेकिन उसके साथ साथ if we talk about the sections which have been discussed, so section 11 भी ठीक है और जो आपका regulation है that is 30, that is also correct. So answer is going to be 1, 2, 4, 5. तो majority cases में you can identify the question through the options. लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया, it's not always true कि आपको ऑप्शन से आंसर मिल जाए. अगर एग्जाम में ना मिले तो चिल्लाना मत. एग्जामिनर अगर मेरे थॉट से चलेगा तो आपको ऑप्शंस में भी फंसा सकता है जैसे मैंने फंसाया. ठीक है, बट हेल्प करेगा, डोंट वरी, इट विल हेल्प यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निवेशक सेवा केंद्र इन हैदराबाद आर करेक्ट. सो निवेशक सेवा केंद्र इन द हैदराबाद, इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स करेक्ट है. सो दीज सेवा केंद्र्स विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम 10 AM to 4 PM. दैट इज करेक्ट. इट विल फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स पेंडिंग, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स पेंडिंग फॉर 3 to 4 years. नहीं सर, 3 to 4 years का इसमें कोई पॉइंट नहीं है. इट इज अबाउट द 7 years. इट एक्सेप्ट ICR forms including ICR 1, ICR 2, ISR 3. That is correct. Enable updating of KYC as well as bank details with depository participants. आप अपने KYC को update कर सकते हैं. That is correct. It is established under Companies Act 2013. Is it correct? Is it correct? Is it established under Companies Act 2013? Is it correct? Give me the answer. Sir, if I talk about the IEPFA, that is the authority which is established under Companies Act 2013. But Niveshak Kendra, sir, they are basically set up by IEPFA, and it is not very, I would say, it is not mentioned in the act under which these
seva kendras are set up. So keeping that point, this is the wrong statement. So अगर यहाँ पे IEPFA होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. 1, 3, 4 आर द करेक्ट आंसर्स फॉर द गिवन ऑप्शन. न्यूज को देख लेते हैं जल्दी से. अगस्त 2025 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इनॉग्रेट्स 3 निवेशक सेवा केंद्र, all 3 in Hyderabad, Telangana, operates 10 to 4 p.m. KFin Technologies, BSc Hyderabad and NSC of India Limited, they will be managing, or they are the collaborating authorities to manage these offices. It will facilitate transfer of unpaid dividends which are pending for 6 to 7 years, not 3 to 4 years, which are pending for 6 to 7 years before they are termed as unclaimed dividends. It will assist investors in updating their KYC and nomination details. It enables the bank account updates with depository participants for direct credit of dividend and refunds. It accepts investor service request form 1, 2 as well as 3. So remember that, strengthen the investor confidence via easy service delivery. Collaboration will be, the collaboration includes SEBI, CDSL, NSDL, BSc, NSC as well as interagency. Synergy is done for betterment and better implementation of these Niveshak Seva Kendra. It is established by IEPFA, which is set up under Companies Act 2013, which is operating under the Ministry of Corporate Affairs. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी हु ऑल कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. IEPFA has been created under section 125 of Companies Act 2013. That is true. It administers the Investor Education and Protection Fund. That is true. Fund include matured deposits, unclaimed dividend, unpaid debentures which are remaining unpaid for more than 7 years, and after 7 years company transfer them into IEPF. That is correct. Only partners with SEBI for investor protection. It only partners with SEBI for investor protection. No sir, that is a wrong statement. It conducts financial literacy and awareness program for the investors. That is true. So answer is 1, 2, 3, 5. So keeping that in mind, A option is the correct answer. Absolutely correct. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following statement regarding the GST rate rationalization which is proposed by Government of India now, which has been accepted by GST Council, it is going to be implemented from tomorrow onwards, 22nd of September onwards. We have a question on this. The GST structure will move from 4 slabs to 2 main slabs, 5% and 18%. 5% GST is proposed for standard goods and services, 40% for the sin and luxury goods. 99% of the items under 28% will move to 18%. Exemption of health as well as life insurance proposed under GST. Give me the answers. Give me the answers, guys. Which of the statements are correct? So first statement is correct. That is, there is no issue with that. Second statement says 5% GST is proposed for standard goods and services. 5% GST is proposed for 5% GST is proposed for standard goods and services. Any idea, guys? 5% is proposed for merit goods. It's not standard goods. This is wrong. These are merit goods. So for merit goods, 5%. For merit goods, the proposal is 5%. But for the standard goods and services, merit goods means I'm talking about the essential items. I'm talking about the items of mass consumption. So second statement is wrong. Third is correct, 40%. 99% of the items from 28 slab will move to 18%. No, sir. 99% items under 12% will move to 5%. ये सही है. 90% of the items under 28% will move to 18%. So this statement is also wrong. Exemption of health and life insurance is being introduced. That is correct. So answer is going to be B option 1, 3, 5. ठीक है, मैं मानता हूं कि ये वाला क्वेश्चन still it was difficult to answer, but this is something which is very tricky. जब आप एग्जाम से बाहर निकले आपको लगेगा यार जीएसटी पे क्वेश्चन आया था मैं तो सही कर दिया. इंटेंशनली आपने सही किया था लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है बिकॉज यू आर नॉट अवेयर कि मैरिड गुड्स कौन से और स्टैंडर्ड गुड्स कौन से. सो डू रिमेंबर दिस. सो प्लीज पे अटेंशन. 5% merit goods, essential items and items of mass consumption. 18% standard goods and services. So merit,
standard, and the third category is sin goods or luxury goods. समझ आई बात? तो merit goods 5%, standard goods 18% and luxury goods are under 40%. इस तरह से अगर याद रखोगे तो रिमेंबर कर पाओगे इन द एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. और इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ऑलरेडी नोन टू यू. लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. Government group of ministers on GST rate rationalization and its recommendation. So it was chaired by समरत चौधरी, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार. ये वाली इंफॉर्मेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूं. सो प्लीज पे अटेंशन अबाउट दिस. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन वाज चेयर्ड बाय समरत चौधरी, द डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, accepted the government of India's proposal to simplify GST structure. So keeping that in mind, the first statement is correct. The group of ministers consists of 6 members, including the finance ministers from Uttar Pradesh, West Bengal, as well as Kerala. That is correct. Recommendation to be forwarded to the GST Council, which is chaired by Union Finance Minister. That is also correct. Health and life insurance for corporates exempted from GST. Corporates exempted from GST मतलब ये पॉइंट क्या है कि सर ये जो प्रपोजल है that is not for corporates, that is for household. अगर आप अपना इंश्योरेंस सर्विसेज करवा रहे हैं उस केस में दिस विल बी अ बेनिफिट, बट इफ इट इज ऑफर्ड बाय द कॉर्पोरेट्स, इफ इट इज ऑफर्ड बाय the organization, your authorities, then it will not be covered. Rationalization aims to reduce classification disputes and simplify the compliance. That is correct. So keeping that in mind, A option is correct. Fourth statement is not absolutely correct. So health and life insurance is exempted. That is correct. लेकिन अगर आप कहेंगे health and life insurance for corporates, that is not exempted. That has not been proposed. ठीक है जी, clear हो गया point. So it is very clearly mentioned. Provide relief to households and improve insurance penetration for individuals. This is 0, not for the corporates. Moving on to the next question. Which of the following statement about Government of India minority stake sale in the 4 public sector banks and Goldman Sachs role are correct? आपको याद होगा 4 public sector banks में गवर्नमेंट का जो शेयर है that is above 90% and government is trying to reduce its shareholding in order to increase the public shareholding up to 25% as per the SEBI requirements. For that particular purpose, Government of India has appointed Goldman Sachs. For that particular purpose, government has appointed Goldman Sachs to complete this entire process. So उससे related this question has been crafted. The stake sale is aimed at meeting SEBI's minimum public shareholding of 25% by 1st of October 2026. That is correct. Public sector companies के लिए this is 1st of October 2016. That is correct. Goldman Sachs will provide valuation, deal structuring, investor education as well as regulatory compliance. ये सारे काम गवर्नमेंट के लिए कौन करेगा? गोल्डमैन करेगा. दैट इज करेक्ट. द सेल रिप्रेजेंट्स अ फुल प्राइवेटाइजेशन. ना सर, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है. ऑफर फॉर सेल अलाउज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेल न्यू शेयर्स इशूड बाय द बैंक्स. ऑफर फॉर सेल allows government of India to sell new shares issued by the banks. देखो 2 पॉइंट्स आते हैं ना. एक हम यूज करते हैं पब्लिक ऑफर जिसमें वी कम अप विद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड follow on public offering, and the other one we have is offer for sale. इन दोनों में क्या difference है? Any idea? This is a conceptual question which has been asked in this particular question. ये conceptual part पे question frame किया है मैंने. देखना जरा स्टेटमेंट को आप एक बार दोबारा से सोचो. Then I will be obviously, मेरा तो काम है आपको आंसर देना. I will be giving you the answer. So what is this offer for sale? Can you explain me? Anyone? Government is selling shares to reduce its obligations. That is true. तो वो तो अगर गवर्नमेंट नए शेयर भी इशू करेगी तो भी पॉसिबल है ना. तो भी तो पॉसिबल है. Okay, I'll tell you. Offer for sale is a method by which promoters or large shareholders of a listed company sell their shares to the public through the stock exchange platform where they are selling out their own shares. But when we talk about the new shares, that is not a part of offer for sale. If company
is selling the new shares, if company is selling the new shares, that process is not termed as offer for sale. What is it termed as? Any idea? It is either called as follow-on public offering, or it is called as IPO. It falls under the category of what, sir? It falls under the category of public issue. ठीक है जी. तो offer for sale is basically when company is selling the shares, or companies, promoters or shareholders, they are selling the shares in order to dilute their shareholding. That is offer for sale. But when company is selling the new shares for the very first time, company is going public, we call it as IPO. Or if it is issuing the shares once it has already launched the IPO, we call it as FPO. But in that case, offer for sale is not the term. Public offering or public issue will be a term. ठीक है जी, क्लियर हो गया. Trench sale and green shoe option help manage market stability and liquidity. That is correct. अब धीरे धीरे सेल कीजिए, एक ही बार में सारे शेयर्स को सेल मत कीजिए. और ग्रीन शू ऑप्शन यू मेंटेन I would say a reserve in order to fulfill the immense demand if comes up in the near future. So answer is going to be B option. 1 to 5 are correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया. चलो थोड़ी सी बातें देख लेते हैं. सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड गोल्डमैन सॉल्ट ट्रांजैक्शन एडवाइजर to manage minority stake sale around 5% each in the 4 public sector banks. Remember the name, Indian Overseas Bank. उसके साथ साथ we have Central Bank of India and we have UCO Bank as well as we have Punjab and Sindh Bank. तो ये 4 बैंक के नाम याद रखें. Remember that in these 4 banks, government is already holding more than 90% of their stake. Purpose is basically to meet the minimum public shareholding of 25% by 1st of August 2026 as per the SEBI norms. So all the listed companies, they must maintain 25% or more than 25% public float to improve liquidity, governance and price discovery for that particular matter. This has been introduced. तो SEBI ने जो ये timeline दी है, this is an extended timeline only and only for the government owned companies. We call them as central public sector enterprises or public sector banks. अब यहाँ पे गोल्डमैन का क्या रोल होगा? So गोल्डमैन का रोल ये है, it will decide that whether we will go offer for sale or we will be coming up with qualified institutional placement or follow-on public offering. We will be offering the shares in one tranche or multiple tranche. All these decisions will be taken by Goldman. That is a point. अब क्वेश्चन अगला है इसी थॉट पे, देखना जरा. Which of the following statement correctly describe the route, pricing and impact of public sector bank minority stake sale? So first point is qualified institution placement strengthened tier 1 capital while reducing the government of India stake. क्या ये पॉइंट ठीक है? अगर गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल आउट करती है तो उससे क्या होगा? सर, उससे ये होगा कि जो कंपनी की कैपिटल है वो तो इंक्रीज होगी, बट उससे गवर्नमेंट का स्टेक क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा. Floor price is minimum acceptable price in an offer for sale or follow-on public offering. ये बिल्कुल ठीक है. That is a floor price. Free float increase enhances liquidity and index inclusion. अगर आपके shares का count percentage ज्यादा होगा तो undoubtedly आपके shares का float market में बढ़ेगा and it will be easy to sell the shares, it will be easy to purchase the share, it will be easy to identify the price of the shares, which is not possible as of today for these 4 banks especially. Retail investors, they can bid for more than 2 lakh per transaction in offer for sale. No sir, that is not allowed. That is not allowed. What is the condition? Give me the answer. Anchor investor help in price discovery and signaling quality to the market. तो ये जो anchor investors है, they help in price discovery. ये सही है. It signal quality to the market because it gives them the support, it gives them the I would say stability when the shares are issued. So that is correct. So 1, 2, 3, 5 are correct. But my question is why this 4th statement is wrong. 4th statement is wrong, ये मैं आपको बता रहा हूं, but ये क्यों गलत है? मुझे इसका आंसर दीजिए. सर, रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, an individual investor who places bid for shares worth up to 2 lakhs in a single transaction. If the retail bids are more than 2 lakhs, the entire bid is automatically considered as non-retail bid, which is coming from high
net worth individual or something like that. So that is the reason if it is saying retail investor up to 2 lakhs is the condition, remember that. Clear हो गया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना जरा. Which of the following statement regarding Dr. Rajiv Ranjan appointment at NDB are correct? So he will be serving for 5 years as vice president and chief risk officer starting from September 2025. ठीक है. He will hold the post while simultaneously serving as the member of RBI's Monetary Policy Committee. नहीं सर, उस कमेटी से तो उनको पहले ही रिप्लेस कर दिया गया by I Bhattacharya. He brings 35 years of experience in the India Central Bank. I don't know. His role at NDB involves oversight of credit, operational and market risk framework. Is this point correct? सोच के बताना. उसके बाद अगला जो point है, that is something which is very doable. So the point says what? So it says that where is the headquarter of NDB? We all know that headquarter of NDB is not in Delhi. So this is a wrong statement. So ये गलत हो गई. उसके अलावा first statement is absolutely correct. Third statement is absolutely correct. And fourth statement is correct. So answer is going to be B option. 1, 3, 4 are the correct answers. I hope it is clear. Moving on to the news. जल्दी से news देख लेते हैं. राजीव रंजन VP Chief Risk Officer New Development Bank, 5 years का tenure, September 2025, 35 साल का experience, Monetary Policy Committee के member, headed DEPR as the last post with RBI. NDB was set up in 2014 by BRICS nations. Its headquarter is in Shanghai, China. Its headquarter is not in Delhi, or its headquarter is not in Beijing, China. Its headquarter is in Shanghai, China. Remember that. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट. चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी न्यूज पे. NDB was established in 2014 by BRICS nation to finance sustainable infrastructure. True. India is the founding member. True. Dr. Rajiv Ranjan, Chief Risk Officer, role involves setting monetary policy for the BRICS nation. ना सर, BRICS nation के लिए monetary policy NDB सेट ही नहीं करता, तो ये तो पॉइंट ही खत्म हो गया. अगला पॉइंट क्या कहता है? The appointment enhances India's representation. That is true. NDB primarily focuses on domestic Indian projects rather than BRICS-wide initiatives. That is wrong. It is BRICS-wide initiative, not for Indian projects. So answer is going to be 1, 2, 4. A option is absolutely correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following statement about the LIC's reclassification in IDBI bank are correct? If I talk about the LIC, आपको याद होगा IDBI bank was first set up as a development bank which was owned by RBI. Later on, its ownership was taken from RBI by Government of India. Then Government of India gave it a dual character, that it will be operating as a development bank as well as commercial bank. Then in 2004, it was completely transferred as a commercial bank. और उसके बाद in 2019 20 की अगर हम बात करें तो इन दिनों में जो इसके मेजॉरिटी शेयर्स है, they were overtaken by LIC, and the moment the majority shares were overtaken by LIC, RBI named this bank as a private sector bank. It has been named as private sector bank. That is which bank? IDBI. अब उससे रिलेटेड एक पॉइंट है. वो पॉइंट क्या है कि सर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू dilute its shareholding in LIC, in IDBI, और इस डाइल्यूशन में LIC और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं. उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया. SEBI has approved the reclassification on 24th of August 2025. That is true. LIC remains a promoter but with reduced voting rights. सर LIC promoter नहीं रहेगा. LIC will not be a promoter anymore. और उसकी जो वोटिंग राइट्स है वो तो रिड्यूस होगी ही होगी. LIC voting rights are capped at 10% post reclassification. That is correct. LIC must reduce its stakes to 15% or less within 2 years. तो LIC को अपने शेयर्स को 15% से कम करना, 15% से कम करना in next 2 years. That is correct. LIC can continue to have board representation. LIC का कोई board representation नहीं होगा. इसीलिए आंसर क्या बनेगा? 1, 3 and 4. B option is correct. आओ जरा इसकी न्यूज देखते हैं पूरी. न्यूज क्या कहती है? On 24th of August 2025, SEBI approved LIC request to reclassify LIC from promoter shareholder to public shareholder in IDBI. This is the part of strategic disinvestment plan for IDBI, where IDBI की जो बैक स्टोरी है 1964, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर कमर्शियल 2004, LIC ने शेयर्स खरीदे 51% से ज्यादा,
फिर बैंक exited from the prompt corrective action category in 2021, गवर्नमेंट पॉलिसी टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी, तो आईडीबीआई को चूज किया गया कि इसे प्राइवेटाइज करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर है इसमें लगभग 45%, एलआईसी के ऑलमोस्ट 49%, एंड द गोल इज टू सेल 60% to a private buyer along with transferring the management, which is called as strategic disinvestment. उसमें कुछ conditions हैं। LIC voting right will be capped at 10%, no board representation or management control, LIC reduce its stake less than 15% within 2 years, and violation will automatically reclassify LIC as public shareholder, जो अब classify हुआ है। अगर आपने कुछ भी follow नहीं किया, then you will be again termed as promoter. Then you will be again termed as promoter, who you are what? So you are LIC. That is the point. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सर, IDBI was established in 1964 as a development financial institute. That is true. LIC acquired 51% stake in 2018. True. Strategic disinvestment involves selling of 60% stakes to a private buyer. True. SEBI allowed LIC to retain full control over management. Wrong. IDBI bank exited RBI's prompt corrective action in 2021. ये 2021 था, 2022 था. It was 2021 only. It was 2021 only. So keeping that in mind, answer is going to be 1, 2, 3, 5. So C option is the correct answer. आपको याद होगा prompt corrective action, अब तो ये applicable है on NBFCs, अब तो ये applicable है on the government owned NBFCs as well. Which of the following statement about Dr. Urjit Patel appointment as ED to IMF are correct? Patel succeeds Dr. K. Subramaniam, whose term ended in April 2025. क्या उनकी टर्म एंड हुई थी 2025 में? सर ठीक है, मतलब एंडेड नहीं था, he was actually removed, but ठीक है, it's okay. He will represent only India? No, sir, he will not only represent India. Along with India, he will represent which all countries? Give me the answer in the comment section. Appointment tenure is 3 years and it is approved by Appointments Committee of the Cabinet, which is chaired by Prime Minister. That is true. His prior role as RBI Governor involved demonetization and monetary policy committee implementation. That is correct. He served as IMF Managing Director before this appointment. नहीं सर, आज तक उनका कोई रोल रहा ही नहीं IMF पे। सो आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 B option is the correct answer. तो मेरा क्वेश्चन था कि he is going to serve or he is going to represent India along with Bangladesh, श्रीलंका and Bhutan. तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान को represent करेंगे who? So the answer is Dr. Urjit Patel. He will be representing them. He will be representing them. Remember that. इसके अलावा और तो कुछ ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सारी चीजें हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी। The question is basically related to Dr. Urjit Patel. He has served as the RBI governor from 2016 to 2018. True. He has oversaw the demonetization and inflation target framework at RBI. बिल्कुल सही है, जो हम कहते हैं ना 4% plus minus 2%. This target was introduced in 2016 only. At that time, he was the representative or he was the controller of RBI. He served as the vice president of AIIB, focusing on Asia's sustainable infrastructure. Is this point correct? Is it correct? Give me the answer. Yes, sir. This is absolutely correct. He has served from 2022 to 24 as AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank, vice president. That is correct. ठीक है जी. IMF Executive Board has 25 EDs plus managing director. That is also true. IMF was established in 1954. नहीं sir, 1954 में नहीं, 1944 में IMF was established. So answer is going to be C option because the last option is incorrect. ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about ASI 2023-24 are correct? अब जिसको नहीं पता ASI, मैंने नहीं लिखा, मैं थोड़ा सा कह सकते हो मुझे आलसी हूं, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर लिखा आएगा। दिस इज एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। आरबीआई बहुत डिटेल में बताएगा। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। आरबीआई विल गिव दिस, इवन आरबीआई विल गिव दिस द एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्री विच इज प्रेजेंटेड बाय सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये होगा आरबीआई में क्वेश्चन। Tamil Nadu leads in unemployment and number of factories. So Tamil Nadu is on the first rank in terms of employment and number of factories. That is true. Sorry, that is true. Maharashtra tops in gross value addition. That is true. Gujarat
ranked first in the output and fixed capital. That is true. Total employment has increased by 10 lakh in the financial year 2023-24. That is also true. Output growth slowed. Output growth was lower than the input growth. तो अगर हम output growth और input growth की बात करें, what will be the answer to this particular question? अगर आप output और input growth की बात करते हैं, so keep that point in mind that it is reverse. ठीक है? Is it clear? It should be reverse. Clear हो गया point? Output growth जो है that was 5.80% and input growth was 4.70%. ये was greater than, ऐसा आएगा, was greater than input growth. इस वजह से गलत हो गया fifth statement. So answer is going to be C option. Data सही है, output growth सही है, input growth सही है, लेकिन ये ज्यादा ना दिख रहा है ना, ये तो lower कैसे होगा, बड़ा ही तो होगा. So answer is 1, 2, 3, 4. Fifth statement is wrong. चलो. So Ministry of Stats and Program Implementation, very good, very good. Someone has given the answer already. बहुत बढ़िया. It is conducted by MOSPI. We call it as Annual Survey of Industries from April 2023 to March 2024. It covers the registered factories, BD and cigar units, power utilities, large enterprises with employees more than 100. Factories and employment, Tamil Nadu is on the top in terms of number of factories and employment. Then gross value addition, Maharashtra is on the top. Then fixed capital, we have fixed capital has witnessed a growth from 41.2 lakh crores to 46.2 lakh crores. Investment capital 68.01 lakh crore increased from 61.39 lakh crores. Employment trend, approximately 10 lakh jobs have been added in the last financial year. Over the decade, manufacturing units has added 57 lakh jobs. That is also correct. Industrial output and input, output growth is 5.80, input growth is 4.70, which shows efficiency and productivity improvement. Top industries, basic metals 11.56%, then motor vehicle and trailers 9.11%. State level पे fixed capital सबसे ज़्यादा गुजरात, output सबसे ज़्यादा गुजरात. So these are something which you need to remember. Question करते हैं और याद हो जाएगा अच्छे से. Fixed capital formation has increased to 46.24 lakh crores. अभी पढ़ा, बिल्कुल correct है. Basic metal contributed highest to the GVA. That is correct. Over the decade, manufacturing unit added 57 lakh jobs. That is correct. Tamil Nadu leads in GVA among all the states. No, sir. GVA में among all the states. Which state is the leader? So Maharashtra is the leader. Total number of factories in India is 2.6 lakhs. That is 2.6 lakh. That is correct. So answer is going to be B option 1, 2, 3, 5. But the fourth statement is wrong. अरे भाई मजा आ रहा है? Are you enjoying? Just let me know in the comment section. मजा आ रहा है? ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है टाइम वेस्ट सा हो रहा है या ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं, क्योंकि आज काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया बिकॉज इट्स संडे. आई नो दैट many of you must be busy with your friends and family, but remember this is something which is really very important. अगर आज मिस कर रहे हो तो दोबारा इसे होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा. You will never get the time again to revise this particular content. आज मैंने annual report भी complete करा दी है in the afternoon. If you have not watched it after this session, go and check that as well. और इस सेशन में आज आपका अगस्त और जुलाई दोनों मंथ्स का जो फाइनेंस करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है जी, आगे बढ़े. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन इन EY इकोनॉमिक वॉच 2025. सो रिसेंटली EY इकोनॉमिक वॉच August 2025 was recently presented. उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है. सो इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2038 ऑन PPP basis. So that is correct. India's MER based GDP, MER means market exchange rate. MER means market exchange rate based GDP will overtake Germany by 2028. That means on the basis of market exchange rate, we will overtake Germany by 2028. That is correct. Average GDP growth from 2028 to 2030 for India is expected to be 6.5%, and for US it is expected to be 2.1%. Absolutely correct. Debt to GDP ratio projected to increase from 81 to 85% फॉर इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें, ये 81 से कम होने के चांसेस है. अराउंड
5.8%. So this statement is wrong. Median age in India in 2025 is 28.8. तो इंडिया में जो median age है that is 28.8 years. That is true. So answer is going to be B option. आओ जरा सारी न्यूज को जल्दी से देख लेते हैं. अब सारी न्यूज क्या कहती है, पूरी की पूरी न्यूज को पढ़ रहे हैं. India could become the world's second largest economy by PPB by 2038. That is true. By 2030, India's PPB GDP will be $20.7 trillion and China will be on the top with $42.2 trillion. It means purchasing power parity के basis पे. अगर आप market exchange rate के basis पे देखेंगे, in that case, India will become the third largest economy by taking over Germany by 2028. India will surpass US in PPP terms by 2038. So this is important. तो अभी China, US, India, then India will become the second one, surpassing US by 2038. अगर हम 2028 से 2030 की बात करें, India is expected to grow by 6.5 and US is expected to grow by 2.1%. Next point is median age of India is 28.8 years. Domestic demand, second highest saving rate globally. That is important. Debt to GDP ratio will fall from 81 to 75.8%. This is something which is again important. अगर हम global level पे बात करें, China growth slowing due to aging, debt, property stress. US का high debt, moderate growth. Germany and Japan, aging population, export dependence. India का market exchange rate terms projected India will be the third largest economy of the world by overtaking Germany in 2028. ठीक है जी. What is the impact of US tariff? So the impact of US tariff on India's GDP is 0.9%. So impact is 0.9% of India's GDP and net growth effect will be 0.1%. So this is the impact of US tariff on India's GDP as well as growth. Next, which statement describe India's growth drivers and global positioning according to EY? Strong domestic consumption act as a buffer against the external shocks. That is correct. GST, Insolvency and Bankruptcy Code, Production Linked Incentive Scheme, UPI are cited as the key structural reforms of the country. That is true. US tariff could affect 0.9% of India's GDP, not 9% of the India GDP. So this statement is wrong. China growth is slowing down due to aging demographics and property stress. That is true. By 2030, India's PPP GDP is expected to be $20.7 trillion. ये 2030 का ही डेटा था. Yes, it was the data of 2030. So this is correct. So answer is going to be 1, 2, 4, 5. A option is absolutely the correct answer. समझ आ गया? I hope it is clear. Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the statement correctly describes SEBI proposed IPO changes? So recently SEBI has come up with some of the IPO related changes, and as per these changes, which of the statements are correct? So the first one is anchor investment or anchor investor lock-in period may be extended beyond 30% to 50% and 90% to 50% structure. So what is this? मैं आपको बताता हूँ. अगर हम बात करें anchor investor की, तो in case of anchor investor, it has been said that the anchor investor will witness an extended lock-in beyond the current 30% and 90% structure to encourage the longer holding. To encourage the longer holding मतलब अगर हम बात करते हैं कोई भी company if it is going for IPO, it comes up with the anchor investor, and anchor investor needs to stay or needs to hold its investment for some time so that market में एकदम से हलचल ना हो, price drop ना हो. So in order to overcome these scenarios, SEBI has come up with certain changes. So qualified institutional buyers who are allotted shares in IPO before the issues open for the subscription to the public is known as anchor investor. So anchor investor, if we talk about the allocation, it says that 30% of the anchor allotment lock-in period for 30 days from the allotment, and remaining 70% lock-in period will be 90 days. समझ लो इस बात को. क्या है ये? सर ये पॉइंट ये है कि अगर आपका एंकर की बात करते हैं तो जो लॉक-इन पीरियड है 30% का, that will be lock-in period for 30% will be 30 days, and rest of the 70% का जो lock-in period है that will be 90 days. That will be 90 days. This you need to remember. ठीक है जी. अब उसके हिसाब से अगर हम चलें, ये जो मैंने लिखा है
go beyond 30%, 30 days, go beyond 70%, 90 days split. तो 30 और 90, 30 और 70 का split है और उसमें जो days का split है that is 30 and 90 days. Remember that. So first statement is correct. Second is number of anchor investor in large IPOs will be reduced to 1 or 2. So जो low number of anchors है in large IPOs that is of value greater than 250 crores, concentrated allotment to only 1 and 2 investors, they are reducing diversity of institutional participants. So it is an issue which is identified. It is an issue which is identified. लेकिन अगर इतना बड़ा IPO है तो उसमें जो number of anchor investors है that should be more as per the SEBI's new rule. तो SEBI चाहता है कि ये बड़ा हो तो इसलिए गलत हो जाएगा. Institutional allocation may be increased, retail allocation may be reduced. Institutional allocation may be increased and retail allocation may be decreased. That is true. ये सही है. Proposal includes revising retail investor quotas to curb under subscription. तो ये proposal ये भी कहता है कि जो आपके retail investor के quotas हैं उन्हें भी हम revise करेंगे ताकि आपका IPO under subscribe ना रहे. Anchor allocation up to 10 crores per investor are deemed sufficient for IPOs greater than 3000 crores. नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं की गई. So keeping that in mind, B option is correct. आओ जरा जल्दी से इसकी डिटेल देख लेते हैं. तो डिटेल में क्या देखना है? Enter lock-in beyond current 30% and 90% structure to encourage longer holding. Increase the number of anchor investors for larger IPOs to be at least 5. Current allocation to 1 or 2 anchors up to 10 crores seen as inadequate for the large issues like greater than 300 or 500 crores. Average IPO size on the main board has exceeded 3000 crore in the past 5 years. Existing anchor norms are not aligned with the large IPO scales, and large term participation reduces volatility and speculative selling post listing. So these are the issues because of which these proposals have been given by SEBI. SEBI का proposal क्या है? Average main board IPO size has exceeded 3000 crore in the last 5 years. That is the reason SEBI is trying to come up with the new proposal. That is true. Retail investors, they are expected to get larger share than institutional investors. No sir, this is wrong. Including insurance firms, foreign portfolio investors, pension funds, domestic mutual funds as anchor is under consideration. बिल्कुल सर इन्हें कंसिडर किया जा रहा है कि इनको भी एज अ एंकर इन्वेस्टर अलाउ किया जाए. Anchor investor changes aims to reduce speculative selling post listing. That is correct. Current anchor allocation norms are fully adequate for large IPOs. They are not adequate for large IPOs. तभी तो नए आ रहे हैं. So answer is going to be B option. Next. Which statement correctly reflect SEBI's proposed green bond reviewer norms? Green bond reviewers must be independent of the issuer's management, director and key personnel. Reviewers can be compensated in stock options instead of cash to avoid conflicts of interest. Reviewers must possess relevant ESG assessment expertise. SEBI registered ESG rating providers can act as a reviewer under these norms. Scope of reviews need to be disclosed in the offer of document. पढ़ते हैं इसके बारे में फिर वापस आएंगे. So SEBI has again proposed sticker norms for green bond reviewers. Objective है to enhance transparency, credibility and accountability in green debt market, mitigate conflicts of interest among the third party viewers, align green bond regulations with the broader ESG linked bond norms. What are the proposals? पहला proposal है independent reviewer. Green bond issuer must appoint reviewers independent of their management, director and key managerial positions. Reviewer remuneration and expertise. Reviewer must be fairly remunerated to avoid conflicts of interest, must possess relevant ESG assessment expertise. Scope of review disclosure. Offer document must disclose the scope of reviews, second party opinion, verification, certification and ESG score. SEBI registered ESG rating provider eligible to act as a reviewer. Regulatory timeline draft has been released and public comments were expected till 31st of August. Now we are expecting the final guidelines from SEBI. Let's try to find out the correct answer. So green bond reviewer must be independent of the issued management, director and key personality. बिल्कुल सर, जो आपका auditor है, reviewer है, वो तो independent ही होना चाहिए. That is absolutely correct.
रिव्यूअर कैन बी कॉम्पनसेटेड इन स्टॉक ऑप्शन इंस्टेड ऑफ कैश, नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. दिस विल रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप हमारी कंपनी के पार्टनर बन जाओ और हमारी कंपनी के नॉर्म्स को पास कर दो, ये तो गलत हो जाएगा. दैट इज रॉन्ग. Reviewers, they must possess relevant ESG assessment expertise. That is true. SEBI registered ASG rating providers can act as a reviewer under these norms. That is also correct. Scope of reviews need not to be disclosed in the offer document. ये भी सही है. So answer to this particular question is 1, 3, 4, क्योंकि आपको ये disclose करने होंगे. Need not to be disclosed, ये wrong है. They are need to be disclosed is correct statement. So answer is going to be 1, 3, 4. Fifth statement is wrong. अगला question उसी पे based है. Which statement correctly describes the purpose and impact of SEBI's proposed norms on green bond reviewers? Aim to align green bonds with ESG linked bond norms issued in June 2025. That is absolutely correct. इसीलिए किया गया है. Designed to mitigate conflict of interest and enhance credibility. Yes. Public comments on the draft were open until 21st of August 2025. Yes. Issuers are allowed to directly appoint their internal audit team as a reviewer. नहीं सर, external appoint करना होगा. Enhances investor confidence and standardizes ESG disclosures. That is true. So answer is going to be D option. 1, 2, 3, 5. Sorry. 1, 2, 3, 5. E option is correct. That is correct. AK is correct. I am wrong. So 1, 2, 3, 5 is correct. Sorry for that wrong option marking. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन लाने से पहले मैं उसकी न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिकॉज आई बिलीव कि इसकी न्यूज इंपॉर्टेंट है. वंस द न्यूज इज क्लियर टू यू देन इट विल बी वेरी इजी एंड फ्रूटफुल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन इज सेबी हैज प्रपोज्ड to raise threshold for RPT shareholder approval. What is this RPT? That is related party transactions. So reduce compliance burden for small transaction is the objective. Enhance corporate governance and standardize reporting across listed entities. So shareholder approval की threshold क्या है? Sir, it has been raised from 1000 crores to 5000 crores based on the annual turnover. Transaction below this limit do not require shareholder approval. Exemption for minor transactions, अगर आपकी RPT related party transaction below 15 crores है, no detailed disclosure is required. Scale based threshold up to 20,000 crore turnover, तो आपके पास 10% of the annual turnover की लिमिट है. 20,000 to 40,000 you have a limit of 5% of the turnover, और अगर 40,000 से ज्यादा टर्नओवर है तो आपके पास लिमिट है 3,000 करोड़ plus 2.5% of turnover or 5,000 crore, whichever is lower. Whichever is lower, these are the conditions. तो अगर इन conditions पे चले तो related party transactions में क्या क्या changes हुए? पहला point, सर related party transaction की अगर हम बात करें, इसकी जो limit है, raise the limit from 1000 crore to 5,000 crore based on annual turnover. अब shareholder थ्रेशोल्ड फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल, सर थ्रेशोल्ड फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए आपकी जो टर्नओवर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 5,000 करोड़, तभी शेयर होल्डर की अप्रूवल की रिक्वायर्ड है. 1000 करोड़ जो पहले थी अब 4,999 करोड़ तक जरूरत नहीं है. अगर अब आपका टर्नओवर 5,000 करोड़ से ज्यादा और 20,000 करोड़ से कम है, देन नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इफ द ट्रांजेक्शन इज अप टू 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर. अगर आपकी टर्नओवर 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ है, उस केस में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है 2,000 करोड़ प्लस 5%, 40,000 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर है तो उस केस में अप्रूवल की रिक्वायर्ड नहीं है. इफ इट इज 3,000 करोड़ प्लस 2.5% ऑफ टर्नओवर और 5,000 करोड़ विच एवर इज लो. ठीक है, तो ये कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है. दे आर इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन. सो शेयर होल्डर अप्रूवल थ्रेशोल्ड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज प्रपोज्ड टू इंक्रीज फ्रॉम 1000 करोड़ टू 5,000 करोड़. बिल्कुल सर, शेयर होल्डर अप्रूवल थ्रेशोल्ड इज प्रपोज्ड टू इंक्रीज फॉर द टर्नओवर 1000 करोड़ टू 5,000 करोड़. Related party transaction below 15 crore will require detailed disclosure in the offer document. No sir, it will not require. Scale based threshold applied depending on the company's annual turnover. True. Transactions below the threshold do not
need shareholder approval. True. Graded disclosure framework classifies RPT into comprehensive, limited and minimum डिस्क्लोजर्स. ये बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा सर? 1345 बी स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एम टू, ये क्यों किया गया? आरबीआई सेबी ऐसा क्यों कर रहा है? इट इज बेसिकली टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉलर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस. जो आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, किसी को पता भी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस क्या होती है? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इतना तो आपको पता होगा. अगर किसी को ये भी नहीं पता तो पूछ लो भाई, सिर्फ बैठे ना रहो कि किसी ने नहीं पूछा तो मैं भी ना पूछूं. मैं बता दूंगा, आप पूछ लेना. सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है सर? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब है एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज, जो इंक्लूड करता है प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजरल पर्सनल्स और रिलेटिव्स, जो इंक्लूड करता है एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय दीज पर्सन्स लाइक सब्सिडीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स या इन्वेस्टर्स who are holding significant influence over the company. इनके साथ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी that will be related party transaction. ठीक है जी, क्लियर. अब यहां पर अगर हम आंसर की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर ऑल आरपीटीज. सर क्या ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है फॉर ऑल दी आरपीटीज? हाँ, इसमें सारी आरपीटीज को तो डिफाइन कर दिया, बिलो अबव सब आ गया. Enhance accountability and corporate governance in the large transaction. That is correct. Remove shareholders approval requirement for all RPTs. No, sir. It has been removed for specific sizes. Apply a graded disclosure framework based on the threshold. That is correct. So answer is going to be 1, 2, 3, 5. A option is the correct answer for the given question. समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं. Which statement correctly describes the feature and compliance norms of India's first SIF approved by SEBI? First SIF approved by SEBI. This is, what is SIF? Any idea? Sir, it is Specialized Investment Fund. What is Specialized Investment Fund? See, basically SEBI has come up with this Specialized Investment Fund with an objective to allow quant mutual funds to launch India's first Specialized Investment Fund, basically introduce innovative investment strategy in the mutual fund ecosystem. So basically SIF, that is Specialized Investment Fund, it is a new mutual fund category which supports long short strategies, which means long strategy means buy stocks expected to rise. Short strategy means bet against stocks which are expected to fall. So it can be structured as open, closed or interval fund. Minimum investment per investor is going to be 10 lakh rupees. Breach of threshold, that means if you are not fulfilling the threshold criteria, then the unit will be frozen. Not rectified in 30 days, then auto redeem at net asset value will be done. ठीक है जी. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, SIF will allow both long and short position in the stock. That is true. Minimum investment per investor is 10 lakh rupees. Units will be automatically redeemed at net asset value if the minimum investment threshold is not rectified within 30 days. That is true. SIF can be structured as open funds, closed funds. That is true. Breach of investment threshold leads to temporary freezing of the units. That is also correct. तो आपका temporary basis पे जो units है that will be freezed. अच्छा, यहाँ पे लिखा है structured only. Sorry, my bad. अगर ओनली लिख दिया तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी. सो आंसर इज गोइंग टू बी बी. 135 आर करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा ना. आपने भी एक वही गलती की जो मैंने की. ओनली वर्ड आप भूल गए. देयर इज अ टर्म ओनली ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, तो उस वजह से फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज इट कैन बी इन ओपन, क्लोज्ड, इन ऑल द फॉर्मेट्स. जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो कोवट म्यूचुअल फंड इज गोइंग टू लॉन्च स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स. Specialized investment funds are basically the new mutual fund category. Buy stocks expected to rise, bet against stocks expected to fall. Available in all the forms. Compliance, minimum investment 10 lakh per investor. Breach of threshold, unit will be frozen temporarily, not rectified in 30 days, then auto redeemed at net asset value. Significance क्या है? So first regulatory note for SIF in India, enable advanced strategies previously not permitted and provides clarity, investor protection and risk mitigation. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को. Which statement correctly highlights the significance and impact of SEBI's approved SIF? It marks the first regulatory approval for the specialized investment
fund in India, true. Enable strategies previously not permitted under traditional mutual fund structures, true. Designed primarily for retail investor with low investment capacity, no sir, it is for high net worth investors जहां पे minimum 10 लाख की requirement है. Aims to enhance risk adjusted returns in volatile market conditions. बिल्कुल risk adjusted कैसे, एक तरफ आपने वो इक्विटी शेयर्स खरीद के रख लिए जो फ्यूचर में बढ़ेंगे और दूसरी तरफ आपने बेट कर ली उन इक्विटी शेयर्स पे जो कि फ्यूचर में फॉल होने वाले. सो यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज योर रिस्क टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. Provide regulatory clarity and investor protection for high value investments. That is true. So answer is going to be B option 1, 2, 4, 5. 30 days वाला पॉइंट का मतलब यह है कि अगर आपने SIF से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की और उसमें अगर आपकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं उनको ब्रीच किया तो 30 डेज तक वेट किया जाएगा. अगर आप उस 30 डेज के टाइम पीरियड में अपनी इन्वेस्टमेंट लेवल्स को ओवरकम नहीं करते, जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा नहीं करते, तो एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट को इनकैश कर दिया जाएगा. नेट एसेट वैल्यू पे जो म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स की नेट एसेट वैल्यू उस पे आपको फंड्स मिल जाएंगे. दैट इज अ पॉइंट. इज इट क्लियर गौरव? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रपोज्ड सेबी नॉर्म्स फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस? For related party transactions below 150 crore will not require disclosure. अगर हम रिलेटेड पार्टी की बात करते हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर 150 करोड़ से नीचे है या फिर 15 करोड़ से नीचे है, अभी तो हमने पढ़ा था कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 150 करोड़ और 15 करोड़. एनी आइडिया? सर द एग्जाम्पशन इज गिवन फॉर द माइनर ट्रांजैक्शंस. The exemption is basically given for the minor transactions, not for the 150 crore rupees of transaction. तो उसके बेसिस पे the statement is going to be wrong. ठीक है. उसके बाद आई होप ये चीजें आप अब कर लेंगे क्योंकि ये न्यूज मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूँ. सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. आई गेस ये मेरे से ही रिपीट हो गया ये क्वेश्चन. आई जस्ट रिमूव इट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. One second. ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन ये है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल बैंक? आई होप आपको पता होगा कि AU बैंक हैज बीन नाउ टर्म्ड एज Universal Bank. So AU Small Finance Bank is the largest small finance bank. That is true. RBI has granted final approval to convert it into a universal bank. Final approval नहीं मिला. This is wrong. जब ये अगस्त में न्यूज आई थी तब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिला था. फाइनल अप्रूवल basically RBI has granted in principle approval by RBI has been received. AU Small Finance Bank total business stands at a value of 2.40 trillion. That is true. Last small finance bank conversion to a universal bank was approved 11 years ago. So I would say the first small finance bank in 11 years to receive RBI node for the universal bank is AU bank only. तो अभी तक किसी भी small finance bank को ये अप्रूवल ही नहीं मिला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. हाँ, अब ये कहो कि पिछले 11 सालों में पहली बार किसी बैंक को ये मिला, दिस इज ट्रू. बट लास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्जन was approved 11 years ago. नहीं सर, ऐसी तो कोई अप्रूवल ही नहीं हुई, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. कन्वर्जन अलाउज AU small finance bank to operate internationally and offer corporate lending. Yes, you will be allowed to do that. So answer to this particular question is going to be what? Sir, answer to this particular question is going to be D option, that is 1, 4 and 5. So 1, 4 and 5 नहीं. करेक्ट आंसर वुड बी, कौन सी स्टेटमेंट्स है हमारे पास? 1, 3, 5. सो 1, 3, 5 इज द करेक्ट आंसर. इसके लिए आप डी ऑप्शन को चूज कर लीजिए. सो डी ऑप्शन इज 1, 3, 5. दैट वुड बी करेक्ट. ठीक है, ये 4 है ना, इसको 3 कर लेते हैं. नाउ इट्स करेक्ट. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 1, 3, 5. फोर्थ गलत हो गया ना बेटा. लास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्जन
to a universal bank was 11 years ago. कौन सा ऐसा बैंक था? ऐसा तो कोई बैंक ही नहीं था ना, ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे कन्वर्ट किया गया, तो इस स्टेटमेंट को फ्रेम गलत किया है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, डी इज करेक्ट. बट जब मैं इसको बना रहा था तब मैंने इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट रखा था, बट नाउ द मोमेंट आई वाज रीडिंग दिस क्वेश्चन तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने फोर्थ स्टेटमेंट गलत बनाई है, तो मैंने इसको अभी के अभी करेक्ट कर लिया. ठीक है जी. सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिवर्सल बैंक इन प्रिंसिपल अप्रूवल, largest small finance bank with 40% of the market share, 2.40 trillion rupees का total business है. Loan book is around 1,09,000 crore rupees. Deposit is around 1,24,000 crores. First small finance bank in 11 years to receive RBI note to become universal bank. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन on the same. EU small finance bank conversion to universal bank क्या कहता है? It reflects RBI's confidence in AU Small Finance Bank growth and scale. True. It enables AU Small Finance Bank to expand services beyond financial inclusion mandates. True. Makes the first small finance bank in India to receive the title of Universal Bank. True. Allow AU Small Finance Bank bypass regulatory oversight applicable to other banks. ऐसा नहीं है sir. You will be following all the norms which are set for the universal banks. Positions AU Small Finance Bank for broader corporate lending and international operations. That is true. So A option is correct. लेकिन जो आपकी fourth option है that is wrong. Moving on to the next one. Which statement correctly reflects RBI's panel recommendations on monetary policy operations? तो monetary policy operations को लेकर कुछ panel recommendations आए थे. उन panel recommendations में कौन कौन सी statements correct है? So the first panel statement talks about retain WACR as the primary operating target. That is true. Weighted average call rate will be maintained as the primary operating target for monetary policy committee. That is correct. So continue using the overnight weighted average call rate as RBI can control it more efficiently than the overnight market rate. So that is correct. अगला पॉइंट आया, डिसकंटिन्यू ऑल रैपो एंड रिवर्स रैपो ऑपरेशन शॉर्टर देन 7 days. फोकस ऑन 7 days और शॉर्टर टेन्योर, ये कहा गया. डिसकंटिन्यू नहीं बल्कि इन पे फोकस करो. 14 days का जो VRR है या VRRR ऑप्शंस है, इनको डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है. दैट इज ट्रू. मिनिमम 1 day प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड फॉर लिक्विडिटी ऑपरेशन विद सेम डे अलाउड इन इमरजेंसीज. ये क्या है? Sir, it says that कि अगर हम बात करते हैं नॉर्म्स की, तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 1 दिन प्रायर एक नोटिस देना होगा फॉर द लिक्विडिटी ऑपरेशंस, और अगर इमरजेंसी है तो आप सेम डे भी नोटिस देकर लिक्विडिटी ऑपरेशन कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरेक्स स्वैप्स आर सफिशिएंट फॉर ड्यूरेबल लिक्विडिटी. दैट इज correct. So these are some of the decisions which have been taken under the meeting. Let's talk about it. So WACR will be maintained as primary operating target. Liquidity management discontinue 14-day VRR and VRRR. Focus on 7-day or shorter tenure repo or reverse repo operations. Minimum 1 day prior notice for liquidity operations. Same day allowed अगर urgent है. Variable rate ऑप्शंस की मैं बात करूं तो रिटेन फॉर प्राइस डिस्कवरी एंड एलोकेशन एफिशिएंसी. persistent liquidity mismatches addressed through longer tenure variable rate operations. OMO, long-term VRR, FX swaps will be there for durable liquidity management. Overnight money market turnover was stated as 281.37 trillion rupees and uncollateralized call money market turnover is around 36 trillion rupees. Remember this. Now, this question which is very important. So, which statement correctly describes the money market trend noted by RBI panel meeting? Overnight money market turnover increased more than fourfold from financial year 2014-15 to 2024-25. ध्यान से देखो ये कितना था सर? It was 281 trillion rupees which has increased to 1324 trillion rupees. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे it has increased 6 times. और दूसरी तरफ अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ अनकोलेटरलाइज्ड मनी मार्केट की तो it has decreased. It has not increased, it has decreased. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं.
Overnight money market turnover increased more than 4 times. This is true. Growth in overnight turnover was driven mainly by uncollateralized segment. नहीं सर, क्योंकि अनकोलेटरलाइज सेगमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनकोलेटरलाइज सेगमेंट में तो ग्रोथ है ही नहीं, बल्कि वहां पे तो डिक्रीज हुआ है. अनकोलेटरलाइज कॉल मनी टर्नओवर डिक्लाइंड from financial year 2024 2014-15 to 2024-25. That is correct. Call money market remain the dominant segment of overnight transactions. Dominant segment nahi, collateralized market segment contributed significantly to turnover growth. हाँ, collateralized का मतलब है जहां पे आपने कोई collateral दिया है. बिना collateral के जो transactions हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा वेटेज भी नहीं रखती है. रिमेंबर दैट. सो आंसर इज गोइंग टू बी 135. बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले आई हैव अ सेबी रिलेटेड न्यूज. सो सेबी टॉक्स अबाउट द एल्गो एंड प्रॉप्रिटरी ट्रेडिंग इन द ब्रोकर रेगुलेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक नए तरह से डिस्कशन होगी. पहले हमने जो डिस्कशन की दैट वाज रिलेटेड टू प्लेज एंड रीप्लेज. दैट वाज रिलेटेड टू प्लेज एंड रीप्लेज. इट इज समथिंग न्यू. आप एक बार पढ़िएगा इसको. आई विल बी राइट बैक. लेट्स टेक अ ब्रेक, है ना. 8:24 हुए. लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 8:27. देन आई विल बी राइट बैक. एंड तब तक अपने सारे दोस्तों को बता दो कि सेशन लाइव चल रहा है. दे शुड अटेंड इट बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आज काफी कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया. सो आस्क देम टू ज्वाइन इट एंड डू hit the like button before going for a break. We'll be back in next 3 months. In next 3 minutes, sorry. Thank you.
ओके, रेडी गाइस, स्टार्ट करें. लेट्स मूव अहेड. चल, so let's get started. 1 second, ये हटा ही. Okay, so to revamp the stockbroker regulation by including algo trading as well as proprietary trading, harmonize rules with the Companies Act, reduce compliance cost and align with technology advancement, this proposal has been given. Proposal क्या कहता है? Algorithmic ट्रेडिंग क्या है उसके बारे में बताया इस प्रपोजल में. प्रॉफिटरी ट्रेडिंग का मतलब है ब्रोकर ट्रेड्स यूजिंग ओन फंड्स फॉर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट मूवमेंट्स, clearing members, person or entity with clearing and settlement rights in recognized clearing corporation or commodity derivative exchange. These were the definitions given under this particular, I would say, the circular given by SEBI. It's a proposal. Compliance simplification, remove inconsistencies in the regulation. Operational requirements include maintain records, meet net worth, fee deposits, and variable obligations. SEBI proposes not defining small investors based on trade size. At least one designated director must stay in India. I hope the voice is clear now. I hope the voice is clear now. ठीक है. So coming back to the point, SEBI proposes not defining small investors based on trade size. At least one designated director must stay in India for greater than 182 days per financial year in case of stockbroker registration eligibility. Rationals include align regulations with technology development as well as harmonize with Companies Act to reduce compliance burden. अब इसके basis पे questions को solve करते हैं. Which statement correctly reflects SEBI proposed changes to broker regulations? First one, algo trading is defined as an automated trade execution using computer generated strategies. Is it correct? Is it correct? Tell me yes or no. Yes sir, that is a correct statement. यही algo trading अभी हमने पढ़ा. Proprietary trading refers to the trading client funds to maximize returns by the stockbrokers. That is true. At least one designated director must reside in India for more than 182 days per financial year for a stockbroker. That is correct. SEBI proposes to define small investors strictly based on trade size. No, SEBI has said that small investors should not be defined on the trade size. So that is the reason fourth statement is incorrect. Broker must maintain records and meet net worths as well as fee deposits and operational requirements. That is also correct. So the answer to this particular question would be, so the answer is first is correct, third is correct, and fifth is correct. What is proprietary trading? So it refers to the trading client funds to maximize returns. Client funds nahi hai, please pay attention. एक बार दोबारा देख लो. Broker traders using own funds for profit from the market movements. That is basically the term which we call it as proprietary trading. इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं. अगर हमसे कोई पूछे कि सर ये proprietary trading को आप कैसे डिफाइन करते हैं with respect to the stock brokers, then my answer to this particular question is, so proprietary trading basically means when a financial institution like bank, broker, and even the trading firm, they trade in market using its own fund, not client's fund. So the goal is basically to earn profit for firm's own account through the equity, bond, or derivative or currency, commodities, etc. So in proprietary trading, the firm is the investor and the firm itself bears the risk. So it is not why it is not allowed, because it is not trading the client's fund for which it has been set up. Trading on the behalf of client is called agency trading or brokerage services. Why firms do this? For higher profit potential rather than commissions. So the answer to this particular question would be, अगर अब हम इसके आंसर्स की तरफ चले,
तो क्या प्रॉप्रिटरी ट्रेडिंग रेफर्स टू दी ट्रेडिंग है क्लाइंट फंड की? नहीं सर, क्लाइंट फंड की जो ट्रेडिंग है दैट इज एजेंसी ब्रोकरेज और एजेंसी ब्रोकिंग सर्विस और ब्रोकरेज सर्विस. सो 1, 3, 5 आर करेक्ट, बट द सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें, समझ आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन. Which of the following reasons SEBI propose revision to the brokers regulation? क्यों ये revisions की जा रही है? Because SEBI want that brokers should align with the technological development like execution only platforms or electronic orders. उसके purpose के लिए उनका जो alignment है that is very important. For that purpose this is done. Incorporating algo and proprietary trading into the regulatory scope, that is true. Increasing compliance burden for small brokers to strengthen investor protection. सर इससे जो compliance burden है small brokers का क्या वो बढ़ेगा? नहीं. Harmonizing regulations with Companies Act, that is true. Ensuring at least 2 designated directors reside. No, only 1 director should reside. So answer is going to be 1, 2, 4. B option is correct. ठीक है जी, क्लियर हो गया. Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन देखो. Which of the following correctly describes recent Nifty 500 ownership trends? So recently Nifty was in news और Nifty 500 में काफी बड़े चेंजेस देखे गए. वैसे तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. क्योंकि एक तरफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से कम हुई और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ी, जिसकी वजह से आपकी मार्केट में वो शॉक ऑब्जर्व नहीं हुआ जो हो सकता था बिकॉज ऑफ द एफपीआई आउटफ्लोज. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. So let's try to find out the answers. So the answer is first one, FPI investment in Nifty has fell down to 18.7%. That is true. DII, that is domestic institutional investor share in Nifty 500 declined marginally to 16.9. Sir, अगर हम बात करें, it has not declined, rather it has increased to 16.9. ये figure ठीक है, लेकिन it should be increased, not declined. FPI invested primarily in banks, telecom and transportation sector. That is correct. FPI increased holding in IT services. No. FPI has reduced their holdings in the IT services. Rising DIA participation indicates strengthening of domestic institutional influence. That is true, which has helped to stabilize the Indian share market. So B option is the correct answer. जल्दी से पूरी news देख लेते हैं. So to analyze the changes in the ownership pattern, Nifty 500 index between foreign portfolio investment and domestic institutional investment was there. FPI invested $4 billion mainly in bank, diversified financial institutes, telecom services and transportation sector. FPI sold majority shares out of electronic utilities and IT services. FPI holding fell to 18.7%, but domestic institutional investment holding increased to 16.9%. अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो मोटा मोटा 2 लाख करोड़ आउटफ्लो हुआ है, FPI आउटफ्लो हुआ है. And on the other side, if I compare it to DIA, sir, in case of domestic institutional investment, the inflow in the share market is around 5 lakh crore rupees. That is the reason your economy, your share market remained stable irrespective of the huge outflow of FPI funds. Remember that it indicates declining foreign ownership and rising domestic institutional participation, reflects changing investor confidence and sectoral performance, since it also strengthens the role of local institutions in the Indian equity market. Now let's talk about the one more question on the same. Declining FPI share indicates a potential decrease in foreign investor confidence. So foreign investor confidence decrease होना या decrease हो गया है, ये कहना क्या यहाँ पर सही होगा? This is a very broad term to come up with. एक लेवल तक यू कैन से यस, एक लेवल तक यू कैन से यस, बट ओवरऑल अगर आप कहो कि डिक्लाइन जो एफपीआई शेयर हुआ है, दैट इज ट्रू. एफपीआई इनफ्लो भी, ग्रॉस एफपीआई इनफ्लो भी डिक्लाइन हुआ. ऑन दैट पर्टिकुलर पर्पस यू कैन से सो, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को शेक किया किसने? नन अदर देन टैरिफ ने, यूएस टैरिफ वॉर. Rising DII share shows increased domestic institutional participation in the equity market. That is correct. FPIs are focusing on IT. No. They are disinvesting in the IT sector. उन्हें पता था आउटसोर्सिंग टैक्स कहीं लगा ना दे ट्रंप. उन्हें यह भी पता था कि कहीं यूएस इंट्रोड्यूस ना कर दे
वीजा चार्जेस, वीजा फीस जो आपने आजकल सुनी होगी, चल रही है न्यूज में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, सेक्टोरल एलोकेशन चेंजेस रिफ्लेक्ट इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस शिफ्ट। बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन यूएस rather than in India. The trend is irrelevant to Indian market liquidity or governance. The trend is irrelevant. Trend does not impact market participation, liquidity and governance. ये incorrect है ना, ये trend तो irrelevant कैसे होगा? Indian market की liquidity को, governance को change किया है इसने. It's not irrelevant, it is relevant. So the answer is going to be 1, 2, 4. So A option is the correct answer. ठीक है जी. अगला question. Which of the following statement accurately describes SEBI proposed pre-IPO trading platform? So SEBI ने एक term दी है नई, that is pre-IPO trading platform. That means before you launch IPOs, you have a platform which we call it as pre-IPO trading platform. पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, then we will be discussing the news. So objective is basically to create regulated venue for pre-IPO shares to enhance transparency, price discovery and investor trust. Proposal क्या है? So SEBI has proposed, SEBI has suggested at the FICCI Capital Market Summit August 2025. This suggestion was given by Tuhin Kanta, which is in pilot mode recently. He talks about shares on IPO bound companies like Tata Capital, NSC, New Age unicorns. They are traded heavily in grey markets. Grey market means which are not recorded. उसमें है unregulated grey markets for the unlisted companies. मान लो मेरे पास शेयर है किसी कंपनी की जो unlisted है, मैंने उसके शेयर्स आपको बेच दिए, गवर्नमेंट को पता ही नहीं. So that is a point. So investor lack pre-listing information for informed decision making. So इन सारे issues की वजह से RBI SEBI came up with pre-IPO share trading platform, where the expected benefits are: first one, regulated trading with proper disclosures, improved price discovery and lower cost of capital, greater investor participation and trust, use of AI for risk assessment, fraud detection and investor engagement. मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स अगर आप बेच रहे हैं, एक तो वो बहुत मुश्किल से बिक रहे हैं और उनका जो ट्रेड हो रहा है दैट इज रियली वेरी टफ. अब सेबी कहता है कोई बात नहीं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म बना के देंगे, उसी प्लेटफॉर्म पे यू कैन ट्रेड योर अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स एज वेल, जो कि इजी हो जाएगा फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव. सो फंड रेजिंग, लॉजिस्टिक, इन्वेस्टर्स ऑनबोर्डिंग, डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड प्रोसेस frictions are the challenges जिसकी वजह से most of the companies they don't go easily for the IPOs. इंडिया में प्राइमरी मार्केट raised around 4.3 lakh crores in the financial year 2024-25. IPO pipeline was around 1.40 lakh crore rupees. So SEBI has introduced the innovative instruments, which is basically to deepen the capital market, which include alternative investment funds, retail and real estate investment trust funds, then infrastructure investment trust funds. They all have been introduced by SEBI to deepen the capital market. So which of the following are the benefits expected from the pre-IPO? IPO pipeline का मतलब है कि जो IPOs आने वाले, जिनका अप्रूवल हो गया या which are on the verge to be approved, which have applied for IPO, that is the pipeline one. वो भी काफी strong है, तो आने वाले दिनों में भी IPO काफी सारे launch होंगे. That is basically referred in this particular news. Better investor access to pre-listing information होगी with the help of pre-IPO trading. True. Reduction in IPO size for major companies. Major companies का IPO size reduce होगा, क्या ये benefit है? Reduce हो सकता है, लेकिन it cannot be a benefit. Enhanced price discovery and transparency. True. Increase cost of capital, it will reduce. Greater investor trust and participation. True. So answer is going to be A option. 1, 3, 5 are the correct answers. Moving on to the next. The next question says, which of the following statement correctly describe the proposed insolvency bankruptcy code amendments 2025? Amendments पढ़ लेते हैं जल्दी से. Basically, to reduce the delay in insolvency process, streamline the admission and approval of the resolution plans, and enhance bidders' confidence, this new amendment has been introduced. What is the amendment? So the amendment has been introduced in Lok Sabha by none other than Finance Minister Nirmala Sitharaman ji in August 2025. Current challenges are average delay in case admission, which is around 434 days on an average.
Delay leads to increased cost and loss of value in stressed assets. Proposed measures are, first one, the educating authorities to have prescribed time limits for approving resolution plan. जैसे ही आपके पास इंसॉल्वेंसी की रिक्वेस्ट आए तो आपके ऊपर एक कंडीशन होगी, आपको जल्दी से जल्दी उस प्लान को अप्रूव करना. Committee of the creditors can request bid approval and direct handover to resolution applicant should be done. Insolvency applications must be admitted within 14 days. तो जो भी insolvency application that must be admitted 14 days के अंदर अंदर. Segmentation of resolution plan into implementation and distribution phases कि भैया पहले implement करेंगे फिर distribution करेंगे to speed up the process. Inclusion of group insolvency, cross border cases and creditor led resolutions in one go. Significance क्या होगा सर, इससे faster admission and resolution होगा, encourage होगा, encourages credit led out of court resolutions को और build करेगा trust among the bidders for stressed assets. तो 2016 में insolvency and bankruptcy code आया था, अब उसमें कुछ changes के लिए proposal दिया गया. पहला टाइम लिमिट होगी, जैसे मान लो आप अपना केस लेकर गए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे, आपने रिक्वेस्ट फॉर इंसॉल्वेंसी की, तो इस कोर्ट के ऊपर भैया एक टाइमलाइन होगी कि इसके अंदर अंदर आपको फाइनलाइज करना होगा, फिक्स करना होगा दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. गॉट इट. उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो व्हाट आर दी intended benefits of IBC Amendment Bill 2025? Faster resolution of insolvency cases, true. Increased litigation at admission stage. Increased litigation at admission stage. क्या ये point ठीक है? Increased litigation at admission stage. Is this point correct? No sir. Admission stage का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे. Enhanced confidence of bidder for stressed assets. That is true. Mandatory आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन, मैंडेटरी नहीं, बट अगर आपको पता है कोर्ट में चलेगा तो काम और जल्दी से होगा, तो कोर्ट के बाहर जल्दी सेटलमेंट होगी. स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स, दैट इज ट्रू. सो आंसर इज गोइंग टू बी 135. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. पिछला क्वेश्चन जो रह गया था वो देख लेते हैं. इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन मस्ट बी एडमिटेड विद इन 14 days, दैट इज करेक्ट. कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन डायरेक्टली हैंड ओवर कंपनीज टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, दैट इज ट्रू. आप डायरेक्टली हैंड ओवर कर दीजिए सो दैट द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन गो एंड गेट द रेजोल्यूशन डन एज सून एज पॉसिबल. अमेंडमेंट कवर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड ग्रुप इंसॉल्वेंसी, दैट इज ट्रू. एजुकेटिंग अथॉरिटीज विल हैव इनडेफिनिट डिस्क्रिशन, ना टाइम लिमिट होगी. सेगमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान is proposed into implementation and distribution phases, that is true. So answer is going to be A option. सिर्फ और सिर्फ 4 statement यहाँ पर आपकी wrong बन जाएगी. Got it guys? Moving on to the next one. अगला question देखते हैं. Which of the following segments correctly describes the proposed changes to NPS investment? NPS सुना होगा आपने. What is NPS? That is National Pension Scheme. So if I talk about the National Pension Scheme, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात की गई है. वो क्या? सबसे पहले अगर हम बात करें एनपीएस का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, दैट इज इंक्रीज, दैट्स फाइन. प्रपोजल है टू इंक्लूड गोल्ड ईटीएफ्स अंडर द ऑल्टरनेट असेट्स. पोटेंशियल इंक्रीज इन द ऑल्टरनेट असेट एलोकेशन फ्रॉम 5 to 10%. ब्रॉडन करो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड टॉप 200 कंपनीज और कंसिडर करो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को. दीज आर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स व्हिच हैव बीन गिवन अंडर द एनपीएस प्रपोजल्स या एनपीएस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स. देखते हैं जरा. PFM may invest in gold ETFs under the alternate assets. So under the alternate assets, you are allowed or you will be allowed as per the proposal to invest in gold ETFs. That is true. Equity investment could be expanded beyond top 200 companies. That is true. Allocation limit for alternate asset could be rise from 5 to 10%. That is also true. Government security allocation capped at 75%. No. NPS subscribers have earned 37% return since inspection. अगर हम since inspection के returns की बात करें, that is not 37%. ये 37% का जो return है ना, that has been witnessed in case of gold ETFs. तो gold ETFs पे 37% के return की वजह से इसे include करने की बात की गई है, but यहाँ पे ये गलत है. So answer is going to be A option. जल्दी से पूरी story देख लेते हैं क्या है. National Pension Scheme. Pension fund managers now allowed to invest in gold ETFs
Total asset under management is 14.4 lakh crores, growth of 23%. Non-government sector 2.91 lakh crore, growth is 29%. Non-government का मतलब प्राइवेट, जैसे मैंने और आपने, अगर हम अभी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रहे, वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टिल वी हैव ऑप्टेड फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, देन दैट शेयर इज 2.91 lakh crores. What are the investment proposals? Include gold ETFs, potential increase in alternate asset allocation from 5 to 10%, broaden equity investment beyond 200 companies, and consider international investment venues. Performance metrics की बात करें तो gold ETFs returned 37% in past year. NPS subscribers, they have earned only 9.3% since inspection. अगर हम बात करें करंट जो लिमिट्स है इक्विटी एसेट्स या इक्विटी असेट्स में, in NPS investment can be up to 75%, corporate bonds, that is C class assets, up to 100%, government bonds up to 100%, alternative assets में 5%, which is expected to increase to 10% as per the latest proposal which has been given recently in front of PFRTA. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट. What are the potential benefits of including gold ETF in NPS? Portfolio will be diversified. बिल्कुल सही है सर, एक नया एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा. देयर विल बी हायर रिस्क विदाउट एडिशनल रिटर्न. रॉन्ग, रिस्क हायर होगा बट एडिशनल रिटर्न भी तो आपको मिला. क्या अभी तक आपको रिटर्न मिला 9.3% का, और यही अगर गोल्ड ETF के रिटर्न की बात करें पिछले साल ही 37% था. तो इट्स बेटर व्हेन यू इंक्रीज एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑल्टरनेट assets. Obviously it will increase that. Alignment with global pension practices, that is true. Limiting exposure to equities only, no, यहाँ पे भी कह दिया कि भैया 200 कंपनी से भी बाहर निकलो, और भी दुनिया है उसे भी एक्सप्लोर करो, वहां भी इन्वेस्टमेंट करो, which will increase the profit or return benefits to the NPS investors. So answer is going to be 134. Next, which of the following statement correctly describes RBI's financial year 2025-26 private capital expenditure outlook? So as per RBI, if we talk about the private capital expenditure outlook, the private capital expenditure outlook is expected to rise by 20% in the financial year 2025-26. That is true. Total sanctioned projects cost is around 3.91 lakh crore rupees. That is true. Greenfield projects contributed 92% of the total projects. True. RBI cited declining capacity utilization as driver for capital expenditure growth. No, that is wrong. 100 BPS basis point or 1% policy rate cut aided liquidity for investment. That is true. So answer is going to be A option. एक बार देख लेते हैं क्या न्यूज है. आरबीआई ने जो रिसेंटली एक रिपोर्ट दी, उसमें आरबीआई ने एस्टिमेट किया है कि अराउंड 2,67,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वर्सेस 2,20,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर which is expected from the private sector, which is because of robust macro fundamentals, improved corporate balance sheet, favorable financing conditions, infrastructure push, and 1% policy rate cut. Project sanctions, 944 projects were sanctioned of total cost 391 lakh crores, 3.91 lakh crores. Our greenfield projects are 92% of the total project cost in the financial year, which is a good point which you need to remember. Greenfield का मतलब जो नए projects है, zero से शुरू हो रहे हैं, so it will obviously boost the economy. Which of the following are cited by RBI as supporting factors for renewed private investment in financial year 2025-26? Improved corporate balance sheet, true. Increased flow in the corporate bond market, increased flow in the corporate bond market, बिल्कुल सही है. अगर आपको पैसा रेज करना आसान हो गया तो इन्वेस्ट करना भी आसान होगा. Reduced government spendings on infrastructure, wrong. Rising imports of capital goods, हाँ बिल्कुल सही है सर. जो आपका imports है capital goods के, वो increase हो रहे हैं. Global uncertainty leading to investment caution, no sir, we are talking about the push, we are not talking about the pulls. So answer is going to be 1, 2, 4. Next, अगला point है RBI mulls halting NBFCs from duplicating business. ये news देख लो एक बार क्या है, फिर we'll talk about the question on the same.
रेगुलेटरी कंसर्न्स क्या थे? डुप्लीकेट बिजनेस क्रिएट कॉम्प्लेक्स लेंडिंग स्ट्रक्चर्स, इंक्रीजिंग सिस्टमैटिक रिस्क। व्हाट इज अ डुप्लीकेट बिजनेस? क्या आपने सुना इसके बारे में कभी? क्या सुना आपने इसके बारे में कभी? डुप्लीकेट कपड़े तो सुने थे सर, ये डुप्लीकेट बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें एनबीएफसीज कैसे इन्वॉल्व है और आरबीआई ने इस पे क्या कहा है, तो इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता आप लोग थक गए, मैं भी थक गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये क्लास चलेगी 1-1.5 घंटा और, सो बी विद मी। सो अगर हम इसकी बात करें तो आरबीआई ने बात की है एनबीएफसी के डुप्लीकेटिंग फंक्शंस की। व्हाट इज दिस एनबीएफसी डुप्लीकेटिंग फंक्शंस? इसका मतलब क्या है सर? जो आरबीआई है ना, वो ये चाहता है कि जो एनबीएफसीज हैं और उनकी जो सब्सिडरीज है दे आर रेप्लिकेटिंग ईच अदर्स लेंडिंग बिजनेस। मान लो मैं एक एनबीएफसी हूं, मेरी एक सब्सिडरी है दैट इज आल्सो डूइंग द लेंडिंग बिजनेस, आई एम आल्सो डूइंग द lending business. So in order to avoid this systematic risk as well as regulatory arbitrage while still supporting the NBFC-led financial inclusion, these changes have been introduced by RBI. तो RBI ने इसमें क्या कहा? RBI ने कहा कि जो डुप्लीकेट बिजनेस हो रहा है, एनबीएफसी जो अपनी सब्सिडरीज से लेंडिंग फंक्शंस करवा रही है, दैट इज क्रिएटिंग complex structures and it may result in systematic risk. Large gold finance companies and NBFCs with microfinance operations may be impacted. RBI का स्टैंस क्या? RBI कहता है NBFC की ग्रोथ होनी चाहिए to improve the credit flow and financial inclusion. गोल है सस्टेनेबल वेल मैनेज ग्रोथ, नॉट स्टिफलिंग इनोवेशन। ऐसा नहीं है कि सर ग्रोथ के नाम पे फ्यूचर में इश्यूज आ जाए, वो आरबीआई नहीं चाहता, आरबीआई ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। अगला पॉइंट है banks like HDFC and Axis Bank, they are scouting partners for consumer loan subsidiaries following tighter scrutiny. That is true. Proposed rules emphasize no overlap in lending activities between banks and their NBFC arms. तो सिर्फ NBFCs ही नहीं, जो बैंक और NBFCs है वो भी अलाइन होनी जरूरी है। जैसे HDFC है या एक्सिस बैंक है, उनको भी स्काउट किया जा रहा है कि जो आपके कंज्यूमर लोन सब्सिडरीज है they should follow the tighter scrutiny. Proposed rules emphasize किए गए कि कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए lending activities between the banks as well as the banks NBFC arms. तो ये भी बात बहुत क्लियरली बोल दी गई है। Which of the following are the objective reasons behind RBI proposed NBFC business overlap restriction? तो इस केस में RBI ने क्या कहा? पहला, reduce systematic risk caused by duplicate lending structures. जो duplicate lending structures है उससे जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसे रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज करेक्ट। प्रिवेंट एनबीएफसी सब्सिडरीज फ्रॉम कंपीटिंग विद देयर पेरेंट बैंक्स, हाँ बिल्कुल कि भैया आपकी सब्सिडरीज आपके साथ ही कंपीट कर रही है, दैट इज रॉन्ग। एनकरेज एनबीएफसीज टू एक्सपैंड रैपिडली इन न्यू सेक्टर्स, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं की तो ये गलत हो जाएगा। हार्मोनाइज रेगुलेशंस बिटवीन बैंक्स एंड शैडो लेंडर्स, दैट इज ट्रू। तो आंसर क्या बनेगा? 1, 2, 4। थर्ड स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन इसके तहत एनकरेजमेंट नहीं है, इसके तहत तो सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि जो आपका डुप्लीकेट बिजनेस है भैया उसको होल्ड करना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ एनबीएफसीज आर लाइकली टू बी इंपैक्टेड बाय दीज डायरेक्टिव्स? सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विद नो बैंकिंग एफिलिएशन, नो सर ये क्यों इंपैक्ट होंगी। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज विद माइक्रो फाइनेंस आर्म्स, ये इंपैक्ट होगी। एनबीएफसी एंगेज ओनली इन कॉर्पोरेट लेंडिंग, नॉट इंपैक्टेड। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, नॉट इंपैक्टेड। ओनली वो इंपैक्ट होंगे जो कि डुप्लीकेट बिजनेस कर रहे हैं। डुप्लीकेट बिजनेस में जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, जो एनबीएफसीज हैं विद माइक्रो फाइनेंस आर्म्स, जिनकी अलग अलग सब्सिडरीज हैं बट दे आर डूइंग द सेम टास्क ओवरऑल, दे विल बी इंपैक्टेड, दैट इज ट्रू। दे विल बी इंपैक्टेड, दैट इज ट्रू। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीपेमेंट चार्जेस ऑन लोन डायरेक्शंस। आपको याद होगा आरबीआई ने डायरेक्शन दी। आरबीआई ने क्या कहा कि अगर किसी इंडिविजुअल ने फ्लोटिंग लोन लिया तो उस केस में, फ्लोटिंग लोन के केस में वो इंडिविजुअल अगर अपने लोन का प्री क्लोजर करता है, फोर क्लोजर ऑफ लोन करता है या प्री पेमेंट करता है, मतलब एडवांस में अपने लोन की पेमेंट करता है, इन दैट केस नो पेनल्टी विल बी चार्ज if the loan is given by scheduled commercial banks or NBFC as well as urban cooperative banks in the different layers. उस layers की अगर हम बात करें, लेकिन अगर आपने ये जो लोन है इस पे कोई चार्जेस नहीं होंगे अगर इंडिविजुअल लोन है। अगर ये लोन बिजनेस लोन है तो बिजनेस लोन के केस में अगर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, एनबीएफसी है जो कि मिडिल लेयर में है,
या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि टियर 4 कैटेगरी का है, उस केस में कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर लोन 50 लाख से बड़ा और स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी या फिर एनबीएफसी बेस लेयर या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टियर 3 अगर इंक्लूडेड है तो उस केस में पेनल्टी चार्ज होगी, और पेनल्टी विल बी डिफाइंड बाय दी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज। याद आया वो पॉइंट? उसी पे ये क्वेश्चन है। नो प्रीपेमेंट चार्जेस आर अलाउड फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर नो बिजनेस पर्पस इवन इफ को ऑब्लिगेंट आर प्रेजेंट। बिल्कुल सही है सर। For business loans up to 50 lakhs sanctioned by small finance bank, prepayment charges can still be imposed। नहीं सर, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक चार्जेस लगा सकता है, बिजनेस लोन के केस में ही लगा सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लोन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। इन ड्यूअल और स्पेशल रेट लोन्स the charges of prepayment charges depend on whether the loan is on floating rate at the time of repayment। अगर मेरा लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों में है और आज फ्लोटिंग में था तब मैंने रीपेमेंट की या प्रीपेमेंट की, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, दैट इज ट्रू। फॉर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेमेंट चार्जेस इफ एनी कैन ओनली बी चार्ज ऑन द सैंक्शन लिमिट, नॉट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सैंक्शन लिमिट कैश क्रेडिट में ठीक है, लेकिन अगर आपका लोन है तो लोन के केस में पेनल्टी विल बी ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओल्ड सर्कुलर्स ऑन प्रीपेमेंट चार्जेस ऑटोमेटिकली बिकम इनवैलिड, व्हिच मींस इस क्वेश्चन से क्या पूछना चाह रहा है कि सर ये जो नई नॉर्म्स है, आर दे गोइंग टू बी वैलिड फ्रॉम 1st of January 2026? यस सर, दे आर गोइंग टू बी वैलिड फ्रॉम 1st of January 2026। तो उस हिसाब से अगर हम चले तो आंसर क्या बनेगा, 1, 3, 4, 5 आर करेक्ट, बट द सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई फाइनल गाइडलाइन ऑन ड्यू डिलिजेंस ऑफ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच ऑपरेटर्स 2025। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच ऑपरेटर्स के लिए आरबीआई ने रिसेंटली गाइडलाइंस दी थी। इट वाज गिवन इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम करके लाया हूं, और ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बात कर रहा है किसकी सर? क्वेश्चन बात कर रहा है, 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड गाइस। हाँ, सो आरबीआई ने फाइनल गाइडलाइंस इशू की है फॉर द ड्यू डिलिजेंस ऑफ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स टू स्ट्रीमलाइन ऑन बोर्डिंग एज वेल एज इनहांस फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये जो गाइडलाइंस है ये 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होंगी, एंड दे हैव बीन कम अप अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। जुलाई 2024 में आरबीआई ने इशू किए थे फाइनल ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ड्यू डिलिजेंस फॉर पब्लिक एंड स्टेक होल्डर फीडबैक। फिर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, इट इज, I hope you know that it is operated by NPCI and it provides interoperable transactions using Aadhaar enabled authentication। तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए। पहला है, एक्वायरिंग बैंक्स जो है दे आर नाउ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस बिफोर ऑनबोर्डिंग एनी एटीओ। किसी भी एटीओ को जब आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, अगर आप बैंक है तो आपको भैया पूरी की पूरी जो ड्यू डिलिजेंस जो आपको फॉलो करनी है, दैट शुड बी डन इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। It should be in line with customer due diligence or KYC norms. However, अगर ATO has already undergone KYC as a business correspondent और सब एजेंट, तो उस केस में आपको जरूरत नहीं है इस पूरे प्रोसेस की। री KYC इनएक्टिव फॉर इनएक्टिव ATOs, तो अगर आपका कोई ATO है जो कि पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से इनएक्टिव है, तो उस केस में उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैरी आउट नहीं की फॉर अ कस्टमर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। एटीओ का मतलब जो आपके बैंक के बिहाफ पर कस्टमर को ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड इंफॉर्मेशन, तो उस केस में आपको उसका क्या करना होगा, री केवाईसी करना होगा उस एटीओ का। लास्ट पॉइंट है, ऐसा करने से जो एक्वायरिंग बैंक्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ एटीओस थ्रू देयर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लॉसेस, एंड the operational parameters should be reviewed on periodic basis। तो उसके हिसाब से अगर हम चले, पहला, these directions are effective from 1st of January 2026। True, acquiring bank must conduct full KYC for all ATOs even if they have already undergone KYC। Wrong, if an ATO remains inactive for 3 consecutive months, re KYC करना होगा। True है, acquiring banks
must integrate operational parameters like location, type, volume, velocity of transaction into their fraud risk management framework. That is correct. उसके बाद अगर हम बात करें एक्वायरिंग बैंक, हाँ करेक्ट है. AEPS transactions are facilitated through Aadhaar based biometric और OTP transactions. That is true. So आंसर क्या बनेगा सर इसका? 1, 3, 4, 5 are correct, but second statement is wrong, क्योंकि अगर वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह रजिस्टर्ड है तो उसका दोबारा KYC करने की जरूरत नहीं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग RBI's recent changes announced by RBI regarding SDF, MSF and market timings. तो अगर आपको याद हो तो RBI ने मार्केट टाइमिंग्स को रिसेंटली रिव्यू किया है. अब उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस है, वो आप याद रखना. रिवाइज टाइमिंग्स जो है दैट वर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2025. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो टाइमिंग्स है, earlier it was 5:30 PM to 11:59 PM, but now they have changed from 5 to 7 PM and from 7 to 11:59 PM they will be available. ठीक है, for SDF as well as MSF. ऐसा क्यों किया? क्योंकि कॉल मनी मार्केट का टाइम एक्सटेंड कर दिया, which was earlier 9 to 5, now it has been extended to 9 to 7, जिसकी वजह से SDF और MSF के टाइमलाइंस को 5 बजे से आगे बढ़ाकर 7 बजे करना पड़ा. उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपोज की, तो ट्रेडिंग आवर्स को एक्सटेंड किया गया फॉर मार्केट रेपोज एंड ट्राई पार्टी रेपोज टू 4 PM. इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1 अगस्त 2025 इन केस ऑफ मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो. ठीक है जी, क्लियर हो गई बातें, समझ आ गया. अब यहां पे देखते हैं क्या होगा. With effect from 1 July 2025, the timing for SDF and MSF will be 7 PM to 11:59. That is true, जो कि पहले 5:30 था. कॉल मनी मार्केट का टाइम भी 5 से 9 कर दिया. दैट इज ट्रू. मार्केट रेपो एंड ट्राई पार्टी रेपो का टाइम एक्सटेंड करके 5 से नहीं सर, इसका टाइम एक्सटेंड हुआ है टिल 4 PM. इसका टाइम एक्सटेंड हुआ है टिल 4 PM. दिस इज रॉन्ग. उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज and interest rate derivative markets, they have no change in timings under this particular circular. बिल्कुल सर, उनमें कोई changes नहीं आए हैं. That is correct. These changes are based on the recommendation of which committee? Sir, these recommendations are done on the basis of Ratha Sham Ratho working group. उनके recommendation पर ये changes किए गए. So keeping that in mind, B option is the correct answer. ठीक है जी, clear हो गई बात, समझ आया, बढ़िया. अगला question. Consider the following statement regarding India's international investment position as of March 2025. As of March 2025, India का जो international investment status है, या आप कहें कि international investment position है, उसके basis पे एक question frame किया गया. If I talk about the yearly highlights for the financial year 2024-25, the net claim of non-residents has decreased. The net claim of non-residents has decreased by $31.2 billion. It has decreased by $31.2 billion. There is rise in external financial asset. External financial asset rise हुई है by $105.4 billion, और external financial liabilities जो increase हुई है, that is $74.2 billion, because of which our net claim of non-residents on Indian assets or net claim of non-residents has decreased by $31.2 billion. ठीक है जी. अब ऐसा क्यों? क्योंकि सर इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, loans as well as currency and deposit, they have resulted in immense inflow of the foreign currency. Asset to liability ratio has also improved. If I talk about the asset to liability ratio, that has also improved from 77.5%, it has improved to 74.1%. This is also an important data which you must remember. उसके बाद अगर हम बात करें composition क्या है इंटरनेशनल asset and liability की, तो इंटरनेशनल asset और liability में जो composition है, रिजर्व एसेट का composition है 58.7%. If I talk about the direct investments, direct investment का composition है 23.7%. If I talk about the other investments like loan deposits, composition is 16.4%, and आखिरी में if I talk about the portfolio investment, composition is only 1.2%.
composition is only 1.2%. If I talk about the liabilities, this is asset, international assets. If I talk about the international liabilities, let me remove my image. उसके बाद अगर हम बात करें, then the next point is portfolio investment. So जो portfolio investment इंडिया में हुआ, that is around 18% as a liability. That is 18% as a liability. अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. India's net IIP remained negative in March 2025, but the deficit has improved from minus 10.1 to minus 8.7% of GDP. Is it true? Is it true? So that is absolutely true. There is no harm in this. This is the correct statement. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Sorry, अगली स्टेटमेंट की ओर. The asset to liability ratio has improved. This is wrong. Reverse assets formed largest share, 58.7% as is written on the screen. This is correct. The share of debt in the total liability has increased from 51.7% to 54.8%. जो शेयर है आपकी liability का, it has increased. No sir, this is the share of debt in the total liability. Share of debt in the total liability. अगर आप share of debt की बात करेंगे in the total liability, share of debt in the total liability has increased from 51.7 to 54.8%. This is correct. Portfolio investment accounted for a larger share of India's external asset than that of external liabilities. अगर हम external asset की तरफ देखें 1.2% है, liability 18% है, तो external asset then of external liabilities larger नहीं, गलत हो गया ना. So answer will be 134. So A option is going to be the correct answer. क्लियर हुआ ये पॉइंट? समझ आ गया? फिफ्थ स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो लाइबिलिटी है वो 18% है, और जो असेट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में जो इंडिया की असेट है दैट इज, उसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है सिर्फ 1.2%. तो क्या वो ज्यादा है? नहीं सर, वो कम है ना. तो उसके हिसाब से आंसर विल बी 134. फिफ्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड. So Depositor Education and Awareness Fund and its revised guidelines as of 1st of October 2025, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया. First statement says DEA fund was established under section 26 of Banking Regulation Act 1949. याद कर लेना, सही है ये. अगला पॉइंट क्या कहता है सर? बैंक मस्ट ट्रांसफर द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स टू Depositor Education and Awareness Fund quarterly through e-Kuber system, including interest incurred till transfer date. So this is wrong. क्यों ये स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि सर the transfers are need to be done monthly and that is need to be done in the last 5 working days, not quarterly. तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट. Refund claims by the banks after repaying depositors. पहले आपके बैंक ने डिपॉजिटर को पे कर दिया, उसके बाद बैंक अपने क्लेम को अपना क्लेम रिपोर्ट करेगा इन फ्रंट ऑफ आरबीआई इन द फर्स्ट 10 वर्किंग डेज ऑफ एवरी मंथ. दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट. अगला पॉइंट है आरबीआई पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अनक्लेम्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स इवन आफ्टर ट्रांसफर टू डीईएफए, इवन आफ्टर ट्रांसफर टू डीईएफ, दैट इज डेफ अकाउंट. दैट इज ट्रू. Udgam portal launched in August 2023 was jointly developed by RBI, RBIT, IFTAS and participating banks to help public to locate and claim unclaimed deposit. That is true. So answer is going to be what? 1, 3, 4, 5 are correct. तो उसके हिसाब से A option आपका correct answer बन जाएगा. Guys, please give me the full form of Udgam portal in the comment section. Udgam stands for, what will be the answer? Sir, it stands for Unclaimed Deposits Gateway to Access Information. I repeat, Unclaimed Deposits Gateway to Access Information. This is the correct answer. Moving on to the next question, guys.
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू आरबीआई's मास्टर डायरेक्शन on credit facilities to SCs and STs, consider the following statement. So SCs and STs से related RBI ने एक master circular दिया था, उसके basis पे this statement has been come up. So the first one is, under the differential rate of interest scheme, SC ST borrowers are eligible loan up to 15,000 at 4% interest and up to 20,000 for housing loan. That is correct, बिल्कुल सही है. At least 40% of the beneficiaries under, नहीं सर, at least 50% of the beneficiaries under DAY stands for, what is this DAYNRLM, National Rural Livelihood Mission. What is this DAY? Give me the answer. तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? So this is 50% beneficiaries should be SC and ST communities. Next is Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Caste managed by IFCI Limited provides guarantee coverage from 15 lakhs to 5 crores for up to 4 years. That is correct, word by word. Under the lead bank scheme, district level consultative committee is headed by the lead bank zonal manager. Review the credit planning at the district level. Nahi sir. DLCC is headed by the district collector, not by the lead bank zonal officer. So this is wrong. This is wrong. So answer is going to be 1, 3, 4. So A option is the correct answer. Deen Dayal Upadhyay Yojana, Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Yojana, that is correct. So Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, correct. उसके तहत 50% beneficiary should be SCs and STs. With reference to the US dollar $200 million Green Climate Fund, Asian Development Bank Clean Energy Initiative in India, consider the following statement. So under this particular initiative, first statement says Green Climate Fund was established in 2010 under the Kyoto Protocol and is headquartered in South Korea. The answer to this particular question is that it was not accepted under Kyoto Protocol. Rather, GCF was established in 2010 under UNFCCC, and its headquarter is in South Korea. That is correct. $200 million approved by GCF will implemented in India through India Green Finance Facility. This is the first partnership with ADB. That is true. ADB will channel the funds via line of credit to Indian developmental financial institutions, which will further develop clean energy projects. That is true. Technologies targeted under IGFF. Rural e-mobility and decentralized renewable solutions. That is true. A $65 million risk sharing facility has been built into IGFF to extend partial credit guarantees, especially supporting the small developers in the CGB sector, that is compressed biogas sector. That is true. So answer is going to be 2, 3, 4, 5 are correct. Only first statement is wrong. So remember this. Moving on to the next question. With reference to the World Bank Spring 2025 Poverty and Equity Brief and related concepts, consider the following statements. The Poverty and Equity Briefs are released twice a year, which is aligned with spring and annual meetings of the World Bank and IMF. Is it correct? That is absolutely correct. So these are aligned with spring plus annual World Bank and IMF meetings. That is true. Second is, as per World Bank 2025, India has been placed in the low inequality category along with countries such as Iceland, Norway, Finland. No sir, India is in the moderately low inequality. This is wrong. India consumption based Gini coefficient has improved, falling from 28.8 to 25.5. This is consumption based Gini coefficient. That is true. India's income based Gini coefficient declined from 62 to 52. I would say no sir, it has 62. India's income based Gini coefficient has improved. It has improved rather from 52 in 2004 to 62
in 2023. That is true. तो उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो गई. Between 2011 to 2023, around 171 million Indians were lifted out of extreme poverty, with 5 states, UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, accounting for nearly 2/3 of the reduction. That is correct. So answer will be 135. 135 means B option is correct. तो ये याद रखना, this is opposite data, ये correct है. ठीक है जी. और इसमें जो गलती है यहाँ पर, India is in the moderately inequality country, not low inequality country. Remember these data. Next. Which of the following statement about India's biofuel sector is correct? India became the world's 4th largest biofuel consumer in 2024, surpassing US. Is this point correct? Sir, India has surpassed China. That is true, but India has not surpassed US. This is wrong. Ethanol blending program involves blending ethanol with diesels for truck. No, sir, it is basically blending ethanol with petrol. This is incorrect, not with diesel. India's biofuel consumption has grown at a compounded annual growth rate of 31.8%. This is correct data. Remember that. 1 barrel of oil equivalent equals approximately 1700 kilowatt hours of energy. क्या ये concept सही है? बिल्कुल ठीक है सर. India biofuel production in 2024 exceeds China's for the 10th consecutive year. इंडिया की जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है उसमें तो इंडिया आज भी पीछे है चाइना से. हाँ, कंजम्पशन में आगे निकल गया, वो बात अलग है. तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सर सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है. बी ऑप्शन करेक्ट होगा. स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अगला क्वेश्चन. Which of the following statement about the new development bank and its recent developments is correct? With the inclusion of Colombia and Uzbekistan, the new development bank has now 12 members. So with Colombia and Uzbekistan, if we talk about the total count of members, it is not 12, it is 11. Remember this point. Brazil, Russia, India, China, South Africa together retain over 55% of the total voting power in NDB. That is true. For 10th annual meeting of NDB Board of Governors, it was held in Shanghai. 10th annual meeting was held in Shanghai. No, sir, it was held in Brazil. It was held in Rio de Janeiro. Brazil. Okay. Next is all new development funded projects are required to fulfill environmental and social governance standards. That is true. Anton Sulanov, Russian finance minister, has been appointed as the vice president of NDB. Vice president of NDB. No, sir, he is appointed as the governor of. He is appointed as the governor. Roman Serov is the vice president, but the governor, the chairman of the board of governor. So the chairman of board of governor is Anton Solonov. And if I talk about the vice president, so the vice president name is Roman Serov. He is also from Russia. ठीक है जी, तो ये गलत हो गया. Second and fourth are correct, so A statement is going to be the correct answer. ठीक है जी. Next, second last question है. 100 क्वेश्चन में खत्म करेंगे. जो बाकी ये क्वेश्चन आपके पास बचेंगे, I'll provide you the PDF, उसमें से पढ़ लेना. ठीक है. Moving on to the next. Which of the following statements about Financial Services Institution Bureau and its recent appointment is correct? Bhanu Pratap Sharma's term as FSIB, Financial Services Institution Bureau Chairperson, has been extended until 30th of June 2026. That is the correct statement. कोई गलती नहीं है. FSIB select executives for public sector banks, private banks and insurance companies. So they select executives for public sector banks, not for the private banks. For public sector insurance companies, not for the private companies. उस हिसाब से गलत हो गया. FSIB was established in 2016 as BBB and then
restructured as FSIB in 2022. Absolutely correct. अगला पॉइंट है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. FSIB act as the primary headhunter for both whole time directors and non-executive chairman. That is true. So आंसर क्या बनेगा 135. उसके हिसाब से A ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा. Last question of the evening, guys. The last question says, which of the following statement about Bulgaria joining the Eurozone and the Euro area is correct? उसके पीछे रीजन है पवन, आई हैव एक्सक्लूडेड द न्यूज. उस न्यूज की मैंने इंफॉर्मेशन हटा दी जिस न्यूज का इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम है. अगस्त का इंपॉर्टेंट था, सारा इंक्लूड किया. सितंबर इंपॉर्टेंट है, सारा इंक्लूड करूंगा. जुलाई का जितना दिया है इन क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन में उतना ही पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. सो बुल्गारिया विल बिकम द 21st कंट्री टू अडॉप्ट यूरो and it will join from 1st of January 2026. That is true. That is true. So it will become the 21st Eurozone member. That is true. Official conversion rate is at this value. If I talk about the official rate, नहीं सर यूरो बढ़ा ना, ऐसे होगा. वैसे तो अगर आपको नहीं भी पता तो रेट हमेशा ऐसे बताया जाएगा, 1 euro is equals to dash of करेंसी ऑफ बुल्गारिया. तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वही गलत है. अगर प्रेजेंटेशन गलत है तो इस ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर सकते हो. यूरोपियन सेंट्रल बैंक मैनेजेस फिस्कल पॉलिसी फॉर द यूरोजोन कंट्रीज. नहीं सर, यूरोपियन सेंट्रल बैंक मैनेजेस मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट द फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज स्टिल विद द इंडिविजुअल गवर्नमेंट. टू जॉइन यूरोजोन, कंपनी मस्ट मेंटेन गवर्नमेंट डेफिसिट अप टू 3% and debt to GDP ratio up to 60%. That is true. Croatia was the most recent Eurozone member before Bulgaria in January 2023. That is also correct. So answer is going to be 145. So B statement is the correct answer. Got it, guys? So these are some of the questions. इसका मतलब ये नहीं है बेटा, उसका रीजन है ना दिव्या. मैंने अभी तो आंसर दिया, मैं तो दे दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. अगर आपको ऐसा ही करना है तो मेरी सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है. आपके पास मंथली पीडीएफ भी है, जुलाई वाली, जून वाली, अगस्त वाली मंथली पीडीएफ है, तो वहां से पढ़ लो. मैंने इंटेंशनली नहीं दिया, मुझे देने में क्या प्रॉब्लम थी. इंटेंशनली इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. अगस्त तक रिक्वायर्ड था, उसकी इंफॉर्मेशन दी है. और इसमें भी जो सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट है जुलाई मंथ के, वो मैं दोबारा शेयर करूंगा आपके साथ व्हेन वी विल बी कमिंग अप विद द आरबीआई सर्कुलर रिलेटेड क्लासेस. तो उसमें कवर हो जाएगा, तो इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है. सो डोंट वरी, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दे चुका हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है इंटेंशनली हटाया. वरना मैं तो सब दे दूंगा, फिर फायदा क्या. मैं तो आपको सब दे दूंगा, फिर फायदा क्या. सब दे दिया तो करोगे कैसे, दिन तो बचे नहीं है सब करने के लिए. ठीक है. तो उसके बाद के कुछ क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, काफी क्वेश्चन है. दे आर अराउंड 126 क्वेश्चंस. तो 26 क्वेश्चन और है फ्रॉम द जुलाई मंथ. 127, 128, 129, 29 क्वेश्चंस और है. वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा फ्रॉम द पीडीएफ. उसमें अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा. डोंट वरी, ये जो 29 क्वेश्चन मैंने आज आपको नहीं पढ़ाए, नथिंग टू वरी. जब मैं मैराथन क्लास लूंगा तो उस मैराथन क्लास में हम इन क्वेश्चंस को रैपिड फायर वे में रिवाइज तो जरूर करेंगे. तो आप पढ़ के आइएगा. इसका रिवीजन मैं रैपिड फायर शो में करा दूंगा व्हेन वी विल बी कंडक्टिंग अ मैराथन सेशन. ठीक है जी, डन हो गया. सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन. विल कैच यू इन द अपकमिंग सेशंस टू गो. बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल. कैसा लगा सेशन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. लास्ट क्लास में आपने काफी कमेंट्स किए, आज भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यू विल बी कमेंटिंग अ लॉट एंड यू विल बी रेफरिंग योर फ्रेंड्स दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंस, करंट अफेयर्स. और उन्हें अगर लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने एग्जाम में, तो ये सेशन के बिना सॉल्व नहीं होंगे, ट्रस्ट मी. So that will be all, guys. See you soon. Bye bye. Take care. Good luck.